Okay, I request whom Rachna is starting or Madhu starting? Sir, you're starting with the prayer. Then Madhu is going to tell me to. Then I'll introduce Nai. Is my I request since the mic is there, I request everyone to start. Okay, let us all get ready for the prayer. Please keep your eyes closed. Since we are celebrating the Women's Day, let us pray the Devi. Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tyambake Gauri Narayani Namostune. Shanti, Shanti, Shanti. Namo Namah. Hello everyone. We welcome you all for this beautiful workshop, New Age Issues of Women. Okay. Yeah, so thank you Nitin sir, Sandhya madam and I for arranging this beautiful workshop, which really shows that you care for women at every stage of their life. So I'll just request Rachna Gupta ji to say something about Nai. Yeah, over to Rachna ji. Thank you, Madhu. Namo everyone. Very happy Women's Day to all the women here. Everybody is looking so beautiful. Our three speakers are also looking very, very beautiful. I can just see how the workshop is going to go by looking at their beautiful smiling faces. So now let me introduce you to New Age Yoga Institute. Yes, it is a 27-year-old Ayush certified institute and a Fit India Center, the only one in Mumbai out of 25 in the country. It is run by the able principal and an Ayush certified yoga master, Sandhya Patki ma'am, who has so far trained 20,000 students and more than 300 certified teachers, along with the CEO, Sri Nitin Patki sir, who is an IITian and also an Ayush certified yoga master. The Institute believes in imparting the best education to the teachers so that they bring out their best to serve and uplift the society and people at large. Once again, I thank you, Sandhya ma'am and Nitin sir, for giving us these opportunities so that we can reach out to everybody and spread happiness through their health. Now over to Madhu for introducing all the three speakers. Thank you, Rachna. Very nicely you introduced Nai. Thank you. I'm also very excited to be here and to have this opportunity to welcome and to introduce all the three speakers who are the panelists today, Sandhya ji Patki, Hemangi ji Marathe, and Manashi ji Changdar. Okay. So all these three speakers have very distinguished career in yoga and health sector. So let me start with Sandhya ji Patki today. She is founder and principal of New Age Yoga Institute. She is Ayush certified yoga master. Sandhya ji is recipient of prestigious award Yoga Bhushan from Vishwa Yoga Darshana. Sandhya ji is QCI examiner of YCB and PQMS. Her mission statement is to live and teach healthy yoga lifestyle. And that we all are seeing that she has trained almost 15,000 students in her personal tuitions and 20,000 students through Nai. Please welcome ever smiling, ever motivating Sandhya ji Patki with a big round of applause.
And now our second speaker is Hemangiji Marathe. She has a distinguished career of 35 years in yoga and wellness sector. A yoga master who is always very eager to help practitioners to improve wellness through her teaching style and different fitness classes. Through therapeutic yoga also. She has worked as a yoga teacher in prestigious Kevaladham Institute. She is currently holding the position of vice principal in K11 Yoga School in Mumbai. She is popular faculty of New Age Yoga Institute. Big round of applause to welcome Hemangiji Marathe madam. And now our third panelist, Manashi Changdar. She is, hello Manashi ji, welcome. Yeah, she is dietitian and consultant nutritionist. Academically, she holds the degree of MSc in dietetics and food service management, CFN. She is a diabetic educator and holds certificate in sport nutrition. She has 11 years of experience in her working field. She has worked as a dietitian in Fortis Hospital, Vashi, New Mumbai, nutrition counselor in Maid Johnson Nutrition Company. Currently, she is working as a dietitian in her own clinic. Now she is level 2 yoga wellness instructor too. Everyone put your hands together to welcome Manashi ji. We welcome you all three, and we are just looking forward for this interesting panel discussion, which is going to be very, very helpful for each and every person who is here, present here, whatever the age of that person is. Okay, so now I request Sandhya madam to say something about this workshop, New Age Issues of Women. So your inputs about that, Sandhya madam, please. Can you repeat? You are not audible properly. Last sentence. I would like to speak in the end. So you're asking me? So ask him to speak again. Yes. Madhu, can you speak again? I haven't heard what you said. Last sentence was not audible. Acha. So today's topic is new age issues of women. We know that everyone is facing some or other issue, physical, mental, different type of issues at different age levels. And everyone is here to get some inputs about your expertise from all the three speakers. So Sandhya ji, I would request you to talk something about issues, what you feel that everyone is concerned about and how we can get, yeah. Yeah, I got your point. Now I'm audible as well, right? Yeah. Since you are only I'm only the voice speaker. I'll have to check which is the left and right. To see which is left and right. I think this is better. Namo Namah, Namaste everyone and all of you here. First of all, let me all congratulate. All of us are celebrating Women's Day today and celebrating our womanhood. And being woman is certainly a great feeling because we are the nurturers of humanity. We are giving birth to children. We are looking after and taking care of the children. And 8th March has been celebrated throughout the world. And we have been celebrating it over years, ever since it has been declared, I remember. And there has been a great celebration and all of us especially look forward to it as a wonderful event. Today we are going to consider the new age issues that are suffered or confronted by women today. Because gone are the days when, you know, we had to address health issues and household issues that we suffered.
But today the world has really changed. I mean, a small girl, a mother may think that I want to see to it that she is having good food. But is the mother herself eating good food in the house? I mean, that is from where everything starts. So the good food habits are not present in the parent. So it's out of question that they are reaching to the girls. Now, with this background, the girl child grows up, and then आजकल तो दो 2.5 साल का बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, right? So the input that is going in our children, we can't all the time say कि तुम ये मत करो, वो मत करो. There is too much of exposure. I mean, we never thought. I mean, there were certain jokes, there were certain words, there were certain situations that our children did not face, or when we were small, we did not face. They were always filtered in the process. But recently, I met one boy who was 19-year-old, and when he was 4 or 5 years, he saw the tower in the US which fell down, World Trade. And the 5-year-old child looking at that news, he sees it repeatedly, something breaking. So for him, it is every time happening. Now we have seen Ukraine war in everybody's house. We have not even thought of the child who is there, who is watching the TV. Do you know what impact we have left on that small child who is looking at the war? So there is too much of an exposure, and as a result, this child does not know what is to be filtered. ऐसी अवस्था में जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब टीनेजर्स में आ जाते हैं, we feel we want to inculcate values in our children. What has already gone in, we just don't know. And as a result, when we see the children behaving in a particular manner, we feel shocked. Okay, youngsters, they are getting into so many abuse, drug abuse ho jata hai, alcohol, smoking. These habits are seen in the children much earlier, which probably were seen in college when we were in college. But nowadays, this exposure is also coming much earlier. Perhaps we have to look into our homes itself. There was one era when there was no bar in the house. But today, in many households, the bar is already there. So something which you think is wrong, you have already got it in the house. And now you cannot stop the child. तो हमको खुद को अपना परीक्षण करना पड़ेगा कि हमने घर में क्या क्या लाया है. Because anything that has come in the house is endorsed by my parents. मेरे माता और पिता को इसकी सम्मति है, इसलिए वो घर में है. Yeah. So even the mothers, you tend to give company to your spouse over a drink, and the child sees you right from a very young age. 4-5 साल का बच्चा देख रहा है आपको, तो फिर अभी बड़ा होके if your child is getting into this habit, now you can't say this is bad. If it was bad, why have you got it in the house first of all? Okay. Now this is one challenge we are having. Second challenge is the lifestyle issues. Our child has become one project who has to be master in everything. Yeah. And as a result, only the 1 or 2 children. I mean, so now the other issue is girls don't want to get married. And if they are married, they don't want to have children. And if they want to be married, they don't want mother-in-law.
They address the senior citizen as a old furniture or dustbin. I heard these terms being used. I am shocked. Yeah, so ऐसी हम लोग के अभी इश्यूज बहुत अलग बन रहे हैं इस एरा में। अभी हम लोग ऐसे स्त्री जन्म, तुमको नाजुक, कोमल, ये सब कोमलता नहीं रही है। हाँ, वो कोमलता has been replaced by a very curt, strong-willed woman, and I don't blame it. It is good. We wanted our girls to be strong because somewhere the previous generation has only given that message. मैं ऐसे कर रहा हूँ, you don't do it. So somewhere that message, but ये करते वक्त शायद हम ही भूल गए हैं कि उनको अनुकंपा, सहानुभूति, compassion, ये शब्द सिखाने को शायद हम ही भूल गए। ना? If I am looking after senior people in my house, then my child will have affection for senior people in the house. And if you are only chosen to be in a nuclear family, forget your daughter willing to be living with her in-laws. And now I also see there's an extreme nature के सबको तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारा। ये इसका भी हाइट इतना हो चुका है that even the seniors or I think now beyond those who are having बहुएं जहाँ घर में आ रही हैं, वो लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं, नहीं तुम तुम्हारा रखो, they already have separate house for the child, so for the son, and the newly couple starts living their own. So what is happening is हमने अपने आप को इतना, खुद के फ्रीडम को इतना वैल्यू कर लिया है, ओवर वैल्यू किया है। As a result, we are wanting our my space का इतना एक्सट्रीम हो गया है कि in my childhood we used to have only one television. Now we have television in every room. अभी टेलीविजन भी कम पड़ रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में होता है। I mean, what is happening is we are getting into small individualized spaces. मैं और मेरा मोबाइल बस। You see, look at the children. Every child has his own digital end in front of his eyes. Where is वो घर में मम्मी खाना पका रही है तो that child is not interested in mummy is doing something. She is looking at her mobile. Same thing is happening with the newly girls who are getting married. Recently, I spoke to one student, and she says, "My bhabi got married, and a very recent story. 3 महीना उन लोग का honeymoon चल रहा है." What is that? No. I mean, it's okay. We also feel we should give space to the newlywed couple. So they are moving, traveling here and there. And when the couple has finished their extended honeymoon, they come back and the bhabhi says, I can't cook. मेरे से नहीं होगा. And she went to her maika. I mean, the girl who has not even stayed in your house for 15 days has gone back to her maika saying मेरे से नहीं होने वाला है. So we are coming into a completely different society today. I mean, where is the interaction that has happened कि आप in-laws को blame करो कि इन्होंने मुझे ठीक नहीं रखा या इन्होंने बहुत ज़्यादा expect किया बहू से. So I think we are really coming into a different society today. तो हमको सभी को सोचना पड़ेगा कि हम कैसी society बना रहे हैं. Even the senior citizens who are 70 today, they also choose to live by themselves because they think I have a particular way of living. I have मेरा सुबह का मेरा जो पूजा है, मुझे walk को जाना है, whatever their personal choices are, they are not willing to adjust. So even the seniors don't want to adjust. The working woman of the house, she does not want to adjust. The teenage child who is there in the house, everybody is focused on what I want.
Nobody is thinking what I can offer. And you are not even to ask offer to some society. You are just asked to offer in your own house. अपने घर में ही कचरा किसी ने झाड़ू किया है क्या घर में किसी ने? You just take an average of the teenagers today. घर में काम किसी ने कुछ किया है क्या? And you feel it is to be led to somebody to do. So in letting the works, इतने हम लोग ने इतने काम let out किए हैं कि हम खुद को ही संभालने के सक्षम नहीं रहे. तो ऐसा कुछ अलग माहौल बन गया है. So my job was just to bring out all problems. So you may be finding why I am talking so negative here. So I hand over to Hemangi now, and then you can add the positive dimension that you find, and in between we'll keep adding. Very nicely explained the new age or modern. That is for the offline. That is for the online. रहेगा कैसे? हाँ याच्यात घाल. एक गेला तरी चालेल ना? Hello. विनाश. Audible है ना? Yes, yes, ma'am. हागान. कुठला तरी एक असेल ना. उलटा दिया से Very nicely explained all the new age women's problems. So to say, women's problems are basically all social problems. Yeah. And women, of course, they come in society. We all live in society. But my approach to see all these things is slightly different. So, अब भारतवर्ष की जो एक भाषा है, जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5000 वर्षों से जुड़ के रखा, उस भाषा में स्त्री के लिए क्या है, मैं भी वो आपको बता. अद्य अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अस्ति. आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिन है. और यत्र महिला स्त्री पूज्यते, यत्र नारी पूज्यते, तत्र रमन्ते देवता. और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम नारी को कितना बड़ा औहदा हमने दिया है कि नारी स्वरूप हमारी जो भारतवर्ष है उसी को हमने मातृभूमि को नारी स्वरूप किया है. हमारा ये देश है जहाँ कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी ये हमारी धरती माता है यानी भारतवर्ष, तो ये स्वर्ग से भी महान है. ठीक है. तो हमारे लिए, जैसे मैं ऐसे सोचती हूँ कि महिला या स्त्री को बनाना ये एक जबरदस्त इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, ऐसा एक भगवान का सुंदर स्वरूप है. सो इतनी सारी अवस्थाओं से वो स्त्री जाती है, तो हर एक अवस्था का आनंद लेना बहुत बहुत जरूरी है. तो ना तो इसी चीज को आप अलग नजरिए से देखो कि अरे बाप रे हार्मोनल इम्बैलेंस, अरे बाप रे अभी प्यूबर्टी आ गई, अरे बाप रे अभी इनफर्टिलिटी आएगी क्यों इसकी हो रही है. तो ऐसे अगर हम हर जगह हर एक प्रश्न को या हर एक बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हर एक स्टेज और अवस्था को अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो कैसे हो जाए. तो ऐसे तो समाज नहीं चल सकता. इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि ज्ञान ज्यादा होने के बाद बहुत भ्रमित अवस्था में वर्णन किया जाता है सभी चीजों का. तो जैसे ज्ञान ज्यादा है इसीलिए हमें आज सभी हॉर्मोन्स के नाम पता है, किस उम्र और अवस्था में क्या क्या हो सकता है, ये हमें पता है. तो पहले से उसमें डरने से क्या
क्या यही डर माँ अपनी बच्चियों में आगे प्रदान करती है? क्या ऐसे ही डर उसकी माँ ने उसकी तरफ प्रदान किया था, मतलब दिया था? क्या ऐसा है क्या? ये एक सोचने का होता है। तो मैं बहुत ही फटाफट आसान शब्दों में हमारी स्त्री की अवस्थाएं के ऊपर बात करती हूँ और क्यों ये हॉर्मोन्स बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यूबर्टी होना बहुत जरूरी है, बराबर। सो हमें जो एक अत्यंत पूर्ण ऐसा काम सौंपा गया है, इसीलिए तो हम अकेले ऐसे हैं कि जो दूसरे हमारे अपत्य को जन्म दे, यानी जैसे आपको सबको मालूम होगा ऋग्वेद की जो आर्या है, या हम हमेशा शांति मंत्र ऐसा कहते हैं, पूर्ण मनम पूर्ण पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये स्त्री स्त्री जन्म ये इसी का प्रतीक है। पूर्ण स्त्री से एक पूर्ण बालक जन्म लेता है, तो ये उसी का एक प्रतीक है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहती थी कि छोटे से बालक का जन्म होने के बाद 3, 4, 5 उम्र से आगे जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है शरीर की, थाइमस ग्लैंड का आसार पड़ता है उसके ऊपर, और धीरे 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 बच्ची प्यूबर्टी एज में यानी सक्षम एज में आ जाती है। पर आजकल उसमें परेशानियां क्या है? उसमें परेशानियां बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो हर एक लड़की को क्यों मेरी बॉडी की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई, क्यों बहुत कम हुई है, क्यों मैं दूसरी मेरी हम उम्र यानी मेरी क्लास में जो लड़कियां हैं उनके जैसी मैं सुंदर नहीं दिखती, क्यों मैं एकदम फ्लैट यानी लड़के जैसे दिखती हूँ? तो ये सारी परेशानियां उनकी माँ या तो घर में जो स्त्रियां हैं उनको ही उनको बताना चाहिए कि हर एक बॉडी की ग्रोथ एक विवक्षित यानी टिपिकल टाइम पे ही हो, है ना। सो क्योंकि मेरी सहेली को 4th स्टैंडर्ड में पुबर्टी आई तो मुझे भी 5th स्टैंडर्ड के अंदर अंदर पुबर्टी आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। ओके, सो बिकॉज इसका एक जेनेटिक असर भी है, जैसे मम्मी को बॉडी ग्रोथ हुआ है वैसे ही आगे जाके मुझे होगा, ठीक है। कि ये बातें मम्मी को ही बतानी है कि ये चिंता करने की बात ही नहीं है, और ये चिंता टेंशन लेने की और क्यों मैं सुंदर वैसे नहीं दिखती ऐसी कुछ बातें मौजूद ही नहीं। तो ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है ताकि मेरे ख्याल से आगे प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाए। और पुबर्टी के एज में उसी माँ को अपनी बेटी को ये इतना जबरदस्त भगवान की तरफ से वरदान मिला है स्त्रियों को, ये बात बहुत अहमियत से बतानी, ना तो बताना है कि प्यूबर्टी होगी, पीरियड्स आएंगे, उसके बाद कैसे डर करके कैसे खेलोगी, कैसे क्या करोगी, कैसे संभालोगी। तो जितना भी हम निगेटिव सेंटेंसेस का बीज बोएंगे उतने ही उसके ऊपर निगेटिव झाड़ आते रहे। तो निगेटिविटी ये माँ में ही नहीं होनी चाहिए ताकि वो बेटी में भी नहीं आए। और ये मैं अपनी खुद की बेटियां ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जहां भी आपको छोटी बेटी दिखती है तो कोई भी ऐसा निगेटिव कमेंट कभी भी नहीं करना, अनजाने में भी। इसके बाद आते हैं हम प्यूबर्टी के बाद एक टिपिकल टीन एजर प्रॉब्लम। तो टीन एजर प्रॉब्लम में भी बहुत सारा पीयर प्रेशर होता है, और बिकॉज ऑफ ऑल दी सोशल रिक्वायरमेंट्स, अच्छा दिखना है, फिर जैसे आम फ्रेंड्स के साथ उनके लेवल में रहना है, इसीलिए कोई बुरी आदतें भी लग जाती है। तो उनके लिए भी जैसे एटमॉस्फेयर जैसे घर में अपना बातचीत का ढंग हो तो वैसे ही वो पलटता है। अगर माँ के साथ या अपनी चाची, नानी, दादी,
कोई बुआ, उनके साथ अगर फ्रेंडली बातचीत किसी भी लड़की की होती है और वैसे ही उनकी सहेलियों के साथ भी उस माँ की बातचीत होती है, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लड़की रहेगी हमेशा, और कोई भी निगेटिविटी उसको दूर दूर से भी नहीं छू सकती। फिर आगे जाके अगर खुदा न खास्ता कोई किसी ओर जैसे परेशानियां आ भी गए, तो भी उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अभियान, बहुत सारे मेडिसिन है, हमारे योग प्रैक्टिसेस है, तो वो डरने जैसी बात ही नहीं। तो पीसीओएस ये जो एकदम बहुत ही बड़ा बना के छोड़ा है इस परेशानी को सभी लोगों ने। तो जैसे मैंने कहा कि मम्मियां ही डरेंगी, तो वो अपना डर जो है वो पास करेंगी अपनी बेटियों को और अपनी मतलब भावी पीढ़ियों को। ठीक है, तो ये फियर क्या होता है? ये फियर एक फियर का डिफरेंट ही डिफरेंट डेफिनेशन मैंने सुना था कहीं पर। सो फियर यानी फॉल्स, गलत, एविडेंस, एविडेंस, false evidence, E for evidence. So A for appearing and R is for real. एक गलत आपको खातरी होती है कि ये जो गलत चीज है उसी को आप पक्का मान के चलते हो। तो ऐसी चीजों का हमेशा होता है हमारे पास फियर। तो फियर जैसी असल में चीज कुछ होती है, बिकॉज इट इज इन फ्यूचर, आगे क्या घटना होगी, इसलिए हमेशा हम फियर में रहते हैं। तो जैसे पतंजलि ने कहा ही है कि अभिनिवेश, तो अभिनिवेश ये उन्होंने कहा था फियर ऑफ डेथ मींस क्लिंगिंग टू लाइफ। पर आजकल उतना दूर जाने की बात नहीं, हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का फियर माओ को होता है और वो पास होता है अपने बेटियों के पास या भावी पीढ़ियों के पास, तो वो सबसे बुरी बात है। तो ये सब चीजें हैंडल करने के लिए हमारे पास योग शास्त्र ये जैसे 5000 वर्ष पुरानी शास्त्र है कि जिसके पास इन सभी चीजों के उत्तर है। अब मैं फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। तो पीसीओएस से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए भी बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस हमारे पास। उसके बाद में जैसे बच्चा होने के बाद जो मानसिक अवस्था होती है स्त्री की, तो अगर वो उसे सक्षम बनाया जाएगा योग प्रैक्टिसेस के साथ साथ, और उसी के साथ योग डाइट के साथ साथ सक्षम बनाया जाएगा, थोड़े से फ्री मेडिटेशन टेक्निक्स और मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ सक्षम बनाया जाएगा, तो कोई भी परेशानी लगेगी ही नहीं। उसके बाद आता है एक कॉमन कहा जाएगा वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम। ये स्त्री के जीवन में आता है जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए और हमारी डिमांड जो है, जो रिक्वायरमेंट है घर में, तो हमें कोई पूछता नहीं भाई आजकल तो हम प्रवाह से रुक ही गए हैं। ऐसे बहुत सारी बात आप स्त्रियों के मुंह से सुनते आते हैं। पर क्यों? आप प्रवाह में कूद मारो, जंप मारो, तो आप अपने आप प्रवाह में मिल जाएंगे, है ना। तो आइडलनेस या जैसे अंतराय विक्षेप, उसमें कहा गया है कि ज्ञान या आलस्य यानी मेंटल लेजीनेस, लेंग्योर या तो फिजिकल लेजीनेस, यही तो सब जड़ है सभी परेशानियों की, जैसे मैं सोचती हूँ। तो एम्प्टीनेस सिंड्रोम ऐसे आएगा ही नहीं, तो उसको कम करने के लिए कर्मयोग जैसे जबरदस्त कोई आंसर नहीं होगा। उसके आगे हम आते हैं हमेशा की खुद की फिजिकल प्रॉब्लम्स यानी एलिमेंट्स, या तो घर में किसी की फिजिकल एलिमेंट्स व्याधियां जो हमेशा स्त्री को त्रस्त करती है। और फिर आगे जाके बुढ़ापा आता है, तो वो एक्सेप्टेंस लेवल, जिसको हाँ ये सभी अवस्थाएं हर एक इंसान में आएगी और आती रहेगी, और उसकी परेशानियां न होकर उसके लिए हल ढूंढना, यही हमें योग सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जिसको हम
परेशानियां कठिन ऐसे बना के छोड़ते हैं, उसके लिए सभी के लिए आंसर यानी उत्तर हमारे पास ही होता है। सिर्फ थोड़ा सा टटोलना होता है, ढूंढना होता है, खुद को ही प्रश्न पूछने होते हैं कि क्या मैं गलत सोच विचार कर रही हूँ, तो क्या उत्तर मेरे ही पास है और मैं नहीं ढूंढ रही हूँ। तो योग शास्त्र हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, ऐसे मुझे खातरी है। बहुत बढ़िया हेमांगी जी, संध्या मैडम। या अब मनीषी जी, हम लोग आपसे सुनने के लिए, आप भी संक्षेप में, now we are expecting and then we are having very nice question answer session after that. So your views about this new age yoga, new age issues of women, and then we'll start with question answer. Thank you, and gratitude to all my teachers, Sandhya ma'am, Nitin sir, and all teachers and my friends. Thank you so much. Namo Namah. मैम ने बहुत सुंदर, हेमांगी मैम ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि पहले जो कोट बताई थी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो यहीं से शुरू होती है कि जननी ही हमारे पुष्टि देती है। जननी किस तरह के से हमें नोरिश, हाउ शी विल नोरिश अस, एंड जन्मभूमि वही हमें खाद्य देती है जिससे हम अपने हेल्थ को कैसे नोरिश कर सकते हैं। तो वही, और संध्या मैम ने बताया कि ये जननी अगर किस तरह से किस तरह से हेल्थ को अपने अंदर ग्रो कर रही है, वही हमारे बच्चे फॉलो करेंगे। तो वो हेल्थ जो खजाना है, जो हम जानते हैं अभी तक कि हेल्थ इज वेल्थ, एंड दैट वेल्थ इज इन ऑल, वेल्थ इज दैट खजाना इज इन आवर ओन होम किचन. That khajana is coming from our own home kitchen. Nowadays we are forgetting that one. That is one health issue. That is one issue, women's issue we can say. Ki, because of career and all those things, we are forgetting that one. So मैं बहुत संक्षिप्त में इनका थोड़ा एक आध solution बताती हूँ कि sometimes we are doing कि जब Saturday Sundays होता है कि हम लोग as a treat we are going outside to spend the time, because all the days we are in working and very busy, so we are spending time on outside having food. So we are thinking that outside food is a part of enjoyment. So why we can't encourage our children and whole family ki Sundays we will make food together at home, and then we will enjoy that one. And we will go outside. Obviously, we will see the nature. What needs to be see the beauty of nature. We can go out. But okay, if you want to go out, we will have cook at home. We will take it, pack it, go there and have food and enjoy. That way also we can enjoy. So previously, we remember that जब हमारे छुट्टी होते थे स्कूल्स में या तभी हम लोग as a picnic we used to call that ban bhojan. लेकिन means we are going to forest and bhojan over there, we cook together, all the friends, even we friends also go together and we will cook together and then have food. That is also was a great enjoyment that time. It was a so great enjoyment. We are cooking how much, whatever cooking, whatever taste, but that taste was great that time. So we are forgetting that tradition. So it is very need that one. This is the need of today. We will bring that tradition today, and we parents and our elders will follow this one. Obviously our next generation will also follow that one. And even we on birthday and parties, we are celebrating with cakes, chocolates, pastries. We are bringing out from the outside and then we are celebrating that one. Instead of that, we can involve children to make laddus. That's sweet, we can make laddus in whatever form they like it. When they will involve in making the laddus and making the food over there, definitely they will enjoy it. So in that way, we can change the scenario of enjoyment of food, because nowadays the food is also part of enjoyment, but we have changed that scenario. So previously, Dadi Naniya, they are making that laddus and all the farsans they are making. So if we engage, involve our children over there to make the food, it is not necessary that they have to cook it.
something they can help it, like arranging the salad, arranging the plates. In that way also, if we involve them, then they will enjoy definitely that one. So this way we can change this our whatever newly cultured and all those things, and we build up a healthy lifestyle in our children also, in our adolescent group also. Nowadays children, we can see that is a big issue ki they like more the outside food than inside food, home kitchen, because parents are not cooking. Because I can hear ki, some of ladies like, no, I will not want to celebrate my birthday because birthday mein bhi to khana mujhe hi banana padega na. So that's why I don't want to celebrate my birthday. So that is a issue. So why it is like that? The cooking is an enjoyment. That is also a good enjoyment that we can make it. Ki how cooks is so enjoying things. Okay. It is also a part of enjoyment that if whole family will build up that one, that we can give it to our greatest gift to our coming generation. So in that way, we can build up the healthy lifestyle among us. So as ma'am told, ki the PCOS is, I also want to say something about PCOS. Why? Because now in recent data survey that once in every 5 women are now getting these problems. Though PCOS Society, the founder of PCOS Society of India, she says ki it is not a disease, it is a health condition which itself is a several health issue. It is not a disease, it is a complex of several symptoms. So as it is rising up very fast, in a 10 years, before 10 years, it was once in a 10 women have been suffering with the PCOS. Now it is once in a 5. So that's why it is a very serious issue now. So we have to take care of that. So how we will take care? This is very simply, we can overcome that. We can prevent that PCOS by changing our healthy lifestyle. So if we as a parents, if we as elders, we will know our generation ki what is the value of our home kitchen. Because as I told, ki all the treasures are coming from the health treasure is coming from the kitchen. So use our kitchen, and from childhood itself we build up the taste of the home kitchen. We know, and it is survey, it showed ki the urban area, the PCOS problems is more than rural area. That means the disturbance where we can make it. Where is the wrong thing where we are doing, that we can make it. Even in whole when South India and Andhra Pradesh and Maharashtra, they have surveyed, and Maharashtra, it was like 22.5% suffering with the PCOS problem compared to Andhra Pradesh and all. So now it is why Maharashtra, this because of the urbanization, very unhealthy lifestyle. We are skipping breakfast and all, we are skipping food. We are trying to follow different kind of crash diet to look us, just look our appearance only. That is the main point. We are not visualize our inside of our body, what is going inside our body, just is the outer appearance. We are now the main concern. So we have to change through ma'am jaise said ki through yoga sadhana we can change this mentality ki how will only the outer appearance is not important, how the whole inside appearance how much important than outer appearance. When we change the inner appearance, then automatically our outer appearance will change simultaneously. So that is the more important. And by changing our lifestyle, by healthy diet, input of healthy diet, we can bring that change. Definitely we can bring that change. So healthy lifestyle, just small, some 5 to 6 points, golden rules to overcome or to prevent PCOS. Like healthy lifestyle means we can use all the multigrain or whole grain or millets, because in the next 2023 will be declared the millets, International Millets Day is coming nowadays, because and India is the greatest production of millets. So why? And that is the traditionally we are using only millets only.
after after very long, means traditionally we are using millets. Now we started like wheat flour and rice we are started using. So include millets, which is rich in micro and macronutrient in a whole meal, a whole the 3 meal, and then 500 grams of fruits and vegetables for gaining good amount of antioxidant. And it is proven that antioxidant rich food can somehow prevent to raise these kinds of PCOS symptoms. Okay, so and then seeds, and there is a I don't want to go take too much of time because I know there is a time restriction. So there is a seed cycle we are following for PCOS. So the small I can say one word, include nuts and seeds to overcome this one. So for the children, we can make it, girl child, we can make it from the childhood itself, say, every day as a snacks. Instead of crackers, biscuits, and pastries and cakes, we can make something with nuts and seeds. And so that it can be tasty, because nuts and seeds contain oily fat. So it is tasty. It will tasty. So we can make in different way that cookies or biscuits with seeds and nuts, so that they will get that good amount of good fat, omega-3 fatty acid from that. And if childhood itself they will build up this good habit, then obviously we can overcome this kind of health issue in future. Thank you so much. Thank you all for giving me opportunity to say something. Thank you. Thank you, Manishi ji. Thank you, Hemangi madam, Sandhya madam. And I think now we have very interesting questions for all the 3 panelists. And for that, I just request Rachna ji to take it ahead with question answer sessions now. Thank you, Madhu. Thank you, Sandhya ma'am, Hemangi ma'am, and Manishi ji for beautiful explanation of everything. I think so. My questions के answer तो आपने दे ही दिया है. आपने कुछ दे दिया है, but just let me just ask you, because मुझे बहुत जानने की हो रही है. तो my first question is to Sandhya ma'am. Sandhya ma'am ने अच्छे से सब समझाया है, but still I want to ask her, ma'am. My question is, before pregnancy and during pregnancy, right? In fact, after that also, लड़कियों को आजकल अपना फिगर कॉन्शियस बहुत है, राइट? सो दे डोंट वांट टू डू ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर डॉक्टर्स टेल देम कि आपको ब्रेस्ट फीड करना, विच इज वेरी गुड फॉर द चाइल्ड, वेरी गुड फॉर द मदर. तो हाउ टू एक्सप्लेन टू द मदर, हाउ विल यू काउंसल द मदर कि ये बहुत जरूरी है, बिकॉज वो नहीं समझते. पीयर प्रेशर एंड एवरीबडी गोज थ्रू गूगल एंड दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट. तो आप कैसे समझाएंगे काउंसलिंग करके उनको? This is an important thing, breastfeeding. I was very disheartened when women told me, I don't want my child latching on my breast, and she stopped feeding just after 1 month. And as we were able to do that, it hurts you to see about. So yes, this is unfortunately a very sad condition. So breastfeeding is not somebody's latching onto your body; it is your feeding. Also, annadan literally. So, and that breast milk is so important. I think nowadays the girls, they don't want any emotional information. Aap maa bane ho, aapko dena hai. They are not emotional people. They are information oriented. तो आजकल की मम्मियों को शायद अपनी भावुकता से आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो. Rather, I think it's a good idea to take a proper professional guidance from a breastfeeding consultant. And we do have such facilities available. And many times, excuse me, gynecologists, not all gynecologists are fully aware that breastfeeding itself is a very independent branch of treating or information. So, because I interact with people in this profession, and they have posts wherein gynecologists themselves are participating and coming to learn, and they say we need to learn all these so many information in detail in our post itself. Okay,
So this is coming from a very authentic source, and it's not hearsay that I'm making a statement. So breastfeeding के बारे में अच्छी जानकारी, scientific जानकारी हो. I mean, do you know that even if a mother has jaundice, her child can be breastfed. Even if a mother has cancer, her child can be breastfed. Even if mother has AIDS, that child can be breastfed. Because nature is, मेरे तो goosebumps हो गए. Nature is really wise to filter out the impurities and give pure nourishment to the child. तो इतना वो प्योर वेज है, इतना सक्षम दूध है वो, तो उसकी सारी साइंटिफिक जानकारी दे दो लड़कियों को. Who doesn't want her child to be healthy? Instead of depending on a डब्बा, which is an external source, आपके तन से निकल रहा है और वो आपके बेबी के लिए. In fact, I was surprised if the child is having cold, if the child is having fever, accordingly the composition of the breast milk changes. How many of us knew this? So breastfeeding is fantastic. इसकी जानकारी ले लो, and I'm sure the girls today are very positive. उनको अगर अच्छे से जानकारी दे दो, तो they are willing to take the information. But कोई emotional melodrama करोगे तो they are not interested. Thank you, ma'am. Very nicely explained. My next question is to Hemangi, ma'am. Hemangi, ma'am, आज Women's Day है, right? And women तो पहले नहीं बनती है, पहले बच्ची होती है, लड़की, then the different age, like adolescent, all ages. I want to you to highlight on asanas and pranayams, जिससे आजकल सभी को beautiful लगना है, right? Including me. Everybody wants to look beautiful at every age. किसी को दादी नानी नहीं लगना, किसी को आंटी नहीं बनना है. So can you just highlight कि हम starting से कौन से आसन्स या प्राणायाम्स पे थोड़ा focus करेंगे, जिससे वो beauty हमेशा ही रहेगी? So, thank you, Rachna, for asking this question. आसन प्राणायाम योगिक practices है. तो इसमें ये सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं आते हैं, इसमें सूक्ष्म व्यायाम आता है, इसमें सूर्य नमस्कार आते हैं, इसमें सेक्सुअल ब्रीथिंग या प्राणायाम आते हैं, इसमें योग प्रैक्टिसेस में आपके मतलब ध्यान धारणा और ध्यान के लिए कुछ टेक्निक्स जो ना जाने माने टेक्निक्स है, टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है, वो भी उसी में आते हैं. तो ब्यूटीफुल बॉडी टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ब्यूटीफुल माइंड इज देयर. अगर मुझे मन में बहुत सारी चिंता है तो नहीं मुझे लोग चिंता नहीं, तेरे को मेरे पे देखो मैं कितनी बहुत सुंदर दिख रही हूँ ना, क्यों ना बोल रही हो. सो आई जस्ट वांटेड टू से that जो सौंदर्य अपने दिमाग में और मन में होगा वो ही परावर्तित होगा अपने चेहरे पे और अपने दिलो दिमाग और शरीर पर. तो उसके लिए इस सभी चीजों का साथ साथ इकट्ठा उपयोग करना बहुत जरूरी है. तो जैसे कि हमारी एज प्रोग्रेसिव है, तो वैसे आपको आसन भी वैसे ही सिलेक्ट करने हैं. आसन और योगिक प्रैक्टिसेस भी वैसे ही सिलेक्ट करनी है. तो मतलब मेरे पास अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लैटर है, उसको मैं योग प्लैटर कहती हूँ हमेशा, क्योंकि पहले मैं जब सोच रही थी, बात कर रही थी, तो मैंने षटक्रिया तो भूल ही गई थी बोलना, तो उसके बारे में मतलब मैं 3 घंटे बोल सकती हूँ. तो अभी अगर लिस्ट ही देती है आपको तो थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार 2, 4 या 6 और फिर थोड़े से यानी 2 आसन स्टैंडिंग में, 2 सिटिंग आसन, 2 आसन ऑन टमी यानी फ्लोर, 2 आसन ऑन दी बैक यानी सुपाइन,
तो ऐसे हमें एक सिलेक्शन करनी है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी नीड बेस यानी रिक्वायरमेंट जैसे है वैसे हमें सिलेक्ट करना है। तो साधारण 30-35 मिनट्स अगर इसमें गए तो फिर आपको जरूरत है कि आपको सेक्शुअल ब्रीदिंग यानी ब्रेथ अवेयरनेस करनी है, उसके बाद प्राणायाम सिलेक्ट करने हैं और प्राणायाम के बाद आपको मेडिटेशनल टेक्निक्स करना बहुत जरूरी। और मैं लेडीज को स्पेशली मैं बहुत ज्यादा लेडीज इमोशनल होती हैं, तो इमोशंस का हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव होता है। और जैसे इमोशंस कन्वर्ट होती है स्ट्रेस में, कोई भी चीज का एकदम छोटी सी चीज का हम स्ट्रेस लेते हैं, अरे मैं घर से बाहर आई हूँ और घर में बच्चों को परोसने के लिए कोई नहीं, बस टेंशन आ गया और फिर उसी धुन में वो लगी रही। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों से भी टेंशन आने की शक्यता होती है। तो वो ज्यादा इमोशंस, ज्यादा निगेटिव इमोशंस कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस दैट इज स्ट्रेस इज हाइपोथैलेमस बोथ। तो उसमें से जो एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, रानी बॉस है, वो कोई हार्मोन्स छोड़ती है और वो डायरेक्ट डगलेस ग्लैंड्स यानी डायरेक्ट ब्लड में निकल जाते हैं वो हार्मोन्स और एक टारगेटेड ऑर्गन पे परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीजों से परे होने के लिए अगर हमने उस बेस रूट इमोशंस को ही निगेटिव इमोशंस से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो ये कैसे शक्य है? तो ये सुविधा सिर्फ मंत्र जप और प्री मेडिटेशनल टेक्निक्स यानी सोहम जप, प्रणव जप, इससे ही होता है। सो जब हम आसन प्राणायाम और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी कहते हैं तो ना तो सिर्फ आसन प्राणायाम बल्कि जैसे षटक्रिया है, कर्णरंध्र, कपालरंध्र, धोती, जैसे प्राणायाम है शीतली, सितकारी, भ्रामरी, और जैसे योगिक प्रैक्टिसेस, अदर प्रैक्टिसेस है योग निद्रा, तो उससे भी हमारे जो चेहरे की झुर्रियां जो है तो योग निद्रा और शवासन से जरूर कम हो जाएगी। पर योगिक प्रैक्टिसेस जो करेगा उससे झुर्रियां आएगी क्यों? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप तीनों को देखकर तो लग रहा है आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो इसीलिए ऑल थ्री ऑफ यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग, तो हमको सीखना चाहिए आपको देख कर। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मानसी जी, राइट? सो मानसी मैम, आई वांट टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ डाइट इन डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ अर्ली मेंस्ट्रुएशन। आजकल लड़कियों को 8 साल की लड़की, 9 साल की पीरियड्स आ जाते हैं, सो व्हाट डाइट कैन दे टेक कि जिससे वो डिले हो, बिकॉज वो अपने टाइम पे हो? कैन यू प्लीज हाईलाइट? Sure. Thank you for question. Very good question. Because of this is the one word answer ki because of the unhealthy lifestyle. That is just now I told ki how urbanized urban population is more prone to now PCOD raising. PCOD, this issue is raising in women's. So that is the reason, because now children they have a huge pressure, because from the parents also they are getting huge pressure, either study pressure or peer pressure, so many pressure. And parents are also in a competitive world, they want to make their child super genius, so they put them in a different kind of extracurricular activities apart from the study. So because of that huge pressure, emotionally they are disturbed, and that will affect their diet obviously. So that's why they are getting some munching problem. So always they want to munch something, and that will increase, especially that time munching, that will increase the sweet craving. And sweet craving means we are generally, children are sweet craving means they will more prone to cookies, biscuits, all the processed refined sugar. So that's why that refined processed sugar and refined flour, they are create a nutrient gap. Because when one meal we will replace by a cookies or pastries instead of any healthy option, then the nutrient gap will
start, because that is the developing age, and that age they need a proper amount of all kind of nutrient. And if that nutrient they are replacing by some other processed food, then imbalance will start, and that imbalance of the food will create the hormonal disturbance in their body, and that hormonal disturbance will later on getting early either early menstruation or PCOD problem or mood swing or chirchirapan, all those symptoms related to PCOD also it raises. So that's why it is very necessary to give proper 3 meal, and in between that snacks is very important, because the childhood parents are concerned about their meal proper, like breakfast, lunch and dinner, but the snacks item we are generally replacing with the cookies, biscuits and all those things stuff. So there we have to take care that snacks should be also comes from the healthy option. We can make in different attractive way the healthy food and involve the children to make the healthy food, and then obviously it will build a healthy character, healthy nature will build up among them, and that will definitely overcome this kind of problems. Thank you. Thank you, ma'am, for your answer. My next question is now to Sandhya, ma'am. Sandhya, ma'am, now some girls, what happened due to their past, maybe some, they must have seen their parents or somebody, friends. So what happens due to that past impact on their life, they want to remain single. They don't want to get married. And they have hatred towards marriage. Unko marriage ka naam lo to, it's just like hatred. They just don't like the closeness of men. Unke samne koi men ka bhi naam lo to gussa aata hai. So can you just suggest some tips? Because this is a very social jo bhi problem hai. Jisse unko counsel karke we can just explain to them कि marriage का positive side उनको कैसे बताया जाए? Yeah, you have asked a very good question actually, because sometimes I wonder how the young generation will know that marriage is actually good. Just open the WhatsApp and you will find at least half the jokes are on husband and wife. Yeah. And we are probably able to appreciate these jokes because they have lived a certain number of years in married life. And what happens is these jokes are being reached to students or boys and girls who are not even yet married. Okay, so marriage की एक अपनी value है. Marriage itself is an institution, and उसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है. You cannot have a class on marriage. The class on marriage is your home only, and the parents' relationship with each other is the first experience for the student or a boy or girl of how the married life is. Now, if my child is not wanting to be married, then I, as a mother, I as a father, need to communicate with the child. I remember I was teaching yoga to one couple, 68-year-old man and his wife, and they had a daughter, 34-year-old, and that lady said, we are just waiting for her to be married and then we are going to go for a divorce. अभी ये बात जब घर में चल रही है तो ये 34 साल की लड़की शादी कैसे कर रही है? At this age you are thinking like this. Okay, so I think the point what you have raised is very good. It cannot be answered in one-to-one. It can be answered only in one-to-one and not as a in common forum. But in this common forum, what I would say is every woman and every man has to start respecting your spouse. I think that's the key. And today we do see a positive picture.
In the beginning, I just gave all the negative rung dal diya tha maine. So I have an opportunity to add the positive dimension here. How many of you here present on the screen and online, offline, seen young fathers changing nappy of their child? How many of you have seen? All of us. That means it's a super welcome change that is happening in our society. There was one time बच्चे ने सुसु किया, वो पापा उसका बेबी के हाथ में दे दिया, इसको संभालो, उसको साफ कर दो. That those days are gone. So the parents are already looking, nurturing their children together. ये जो togetherness का bond develop हो रहा है, यही यूं ही चलता रहे, automatically marriage संस्था की value आप ही बन जाए. That's what I feel. Thank you, ma'am. Very nicely you explained. I know वो एक you cannot just explain about it जब तक one-to-one counseling नहीं होगा. But thank you. My next question is to Himangi ma'am. Himangi ma'am, meditation now. We all keep talking about meditation, listening about meditation. Am I audible? And how to inculcate ये जो habit है meditation का, आप कितनी बार देखो, जो बच्चों का तो छोड़ दो, जो बड़े भी होते हैं at the age of suppose 50, 60, they cannot sit. उनसे बात भी करो मेडिटेशन का तो एक गुस्सा आ जाता है. They cannot. So हम बच्चों की क्या बात करें? So how can we just start? आप किसी को A से start करना मेडिटेशन का, तो how will you just बोलते हैं उनको कैसे समझाओगे? Can you please explain this, ma'am? Yes. So हाँ, ये आपने जो रचना आपने जो बोला कि हर कोई कहता है नहीं मेडिटेशन करो, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं मेडिटेशन करो, प्रॉब्लम्स आए मेडिटेशन करो. तो असल में करना क्या है कोई भाई, वो तो बताओ. अच्छा, तो मुझे भी बहुत सारे पेशेंट्स फोन करके सीखते, मुझे ना सिर्फ मेडिटेशन सीखना है. हाँ भाई चलो सीखे. तो कैसे सिर्फ मेडिटेशन? हमारे मुझे प्राणायाम वगैरह कुछ मेरे को सांसों वगैरह कहीं नहीं देखना है, मुझे सिर्फ मेडिटेशन सीखना है, डायरेक्ट मेडिटेशन. तो क्या ऐसे हो सकता है? तो कभी भी आपको अब में रहना है, मीन्स बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहा जाए, नॉट योगिक टर्म्स, बट अगर मुझे वास्तव में रहना है तो सबसे बढ़िया और मेरे अंदर मेरे पास ही बिना पैसे खर्च किए क्या है मेरे पास? तो मेरे पास एक ही चीज है. जब से मेरा जन्म हुआ तब से मेरे पास एक मुफ्त में चीज है, और वो है मेरी सांस, मेरी सांसों की रफ्तार, मेरा सांसों का आना जाना. हवा लेना और छोड़ना, यही मेरे पास हमेशा से है और रहेगा. तो अगर किसी को भी मेडिटेशन सिखाना है तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछती हूँ हमेशा, तो चलो भाई मुझे बताओ कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हो? ये क्या क्वेश्चन है? मैं तो जिंदा हूँ. अरे मैंने तो ना बोला, मैंने सिर्फ पूछा कि 1 मिनट में अंदाजन कितनी सांस लेते, वो तो कभी देखा ही नहीं. मतलब आप अब में कभी रहे ही नहीं. तो चलो थोड़ी देर के लिए वही सीखते हैं कि अब फिलहाल जस्ट नाउ मेरी सांस कैसे आती जाती है. फिर घड़ी लगा के भी देख सकते हो कि 1 मिनट में मैंने कितनी सांसें की. तो देखना है, इसीलिए कोई लोग जानबूझ के लंबी सांसें करते हैं, छोटी सांसें करते हैं, ऐसे चीटिंग भी चलती है. कोई बात नहीं, पर ये बात करने में आखिर में कहती हूँ मैं कि 10 मिनट आप बैठे तो सही, है कि नहीं? तो ये जो बुक है अपने पास ये एक बुक है जिसमें लाइट्स मिलते हैं तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और फिर हम और बुक हो जाते हैं, है ना? तो मेडिटेशन एक्चुअली डोपामाइन रिलीज करता है और आप शांत खुश रहो बिना कोई वजह.
अनकंडीशनल हैप्पीनेस। सो इसके लिए सांसों के जरिए अपने मन के पास पहुंचो, जो भी कुछ कचरा है वो निकाल दो, अपने आप को ही बोलो कि ये कचरा मैं निकाल दे रहा हूँ, और फिर से सांसों के साथ रहो। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप कोई भी आलम्बन, हमारे मीटिंग सर का एक बहुत ही फेवरेट वर्ड है आलम्बन, क्या है, मैं मेडिटेशन करूं पर किस चीज को पकड़कर, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, या आप कोई भी त्राटक शुरू कीजिए और वहां से आप मेडिटेशन में चले जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा ये मेडिटेशन था क्या, अरे हाँ यही तो था। तो मेडिटेशन की एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, और मैं 1 घंटा और मेडिटेशन करता हूँ, कभी कभी 2 घंटा भी करता हूँ, तो ऐसे बोलने वाले लोगों को आप कुछ पूछोगे नहीं, वाह 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 वेरी गुड, ऐसे ही सिर्फ आंसर, क्योंकि मेडिटेशन ये अपने आप होता है, हम जो करते हैं उसे हम कहते हैं प्री मेडिटेशनल टेक्निक्स। तो योग निद्रा, त्राटक, भ्रामरी प्राणायाम, सोहम यानी अजपा जप, ये मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी चीज नहीं लगती, अपनी सांस तो मैं आज मैं अब में रहती हूँ। फिर प्रणव जप, ये सब प्री मेडिटेशनल टेक्निक्स है, उससे ही आप अपने आप फिसल के जाते हैं मेडिटेशन। तो भले कुछ दिन ऐसा हो जाता है कि आप 20-25 मिनट उसी अवस्था में रहे, और कुछ दिन ऐसा होता है कि भाई 10 मिनट ही रह पाए, पर इसको इधर किसके साथ कंपटीशन हो रही है, ना किसी के साथ कंपटीशन है, ना बराबरी की बात है, ये अपने पास ही जो है वो सिर्फ खोजना है। तो जैसे पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, धारणा सूचक योग्यता मनस, तो ये जैसे हम थोड़े से धारणा में बैठते हैं तो अपने आप आपके दिमाग के ऊपर जो भी पर्दे हैं वो निकल जाते हैं, अपने आप ध्यान में चले जाते हैं। थैंक यू रचना। Thank you, ma'am. Very nicely explained. Thank you so much. My question is to now Manshi Di. Does eating right type of food change the behavior of the teenagers? Because teenagers are very, very important. तो जैसे कि जैसा खाते हो वैसा ही भी सोचते हैं, right? The food we eat, we think that way. So can you just explain what type of food children should eat? Children, teenage is the age, it is the new stage of age. With that time, they are in the middle. Like they will think, I know everything, and they don't like to interfere others. So how we will build up healthy habit? It will healthy habit build up from the home itself. So if we'll sit with them together, at least one meal, either lunch or dinner or anything, at least one meal we should do together. And it should show that all the family members are involving in that, making the food or serving or any way. So if at least one meal we will do together, and that time we will enjoy the food. Before that we'll pray with the food, and bring a thoughts like whatever we are eating, it will nourish our body. If start our food with in this way, definitely it will help, and slowly it will build up. One meal we'll do together, and holiday, during holiday or Sunday, Saturdays, we can have more, like more than one meal, 2 or 3 meal with together in healthy way. Start from the salad start from the salad and all the grains, and then pulses, proteins, all the nutrient where we can get it together. And before going to the adolescent age, we will bring the value of food to the children, because in different way from before when child age or itself we will increase the means improve or develop the taste bud only the home food, because you know that 40s 50s or elders, they doesn't like pizzas and burgers.
They doesn't like, they will provide them also. They are, and even from villagers, the village people, when they will come and I will serve them to pizza burger, they said, you know, it is that how you are taking it, telling it is so tasty, but there is no taste over there. इससे तो अच्छा घर का भाकरी एंड उसमें जो टेस्ट है, not tasty that one. Why? Because their taste bud is developed in such a way, because we have not given any option to any kind of junk in their food, overall food. So if we build up that, we will not give any option, we will not keep any junk, we will not keep any option, and if we will build up in such a way that this is not a part of our food, so then only they will build up the healthy habit. So this healthy habit will definitely make, and the balanced and healthy habit definitely they change their emotional behavior and social behavior also. You can we will notice it when we will overeat, or overeat, we will feel exhausted, tiredness, okay, laziness, this kind of thing will rise. Even that overeating, even overeating or less eating also, because the children will, this age, the adolescent age, children are more attracted to beauty of their outer appearance. So that's why they are doing more on the crash diet kind of thing. So that will bring a nutrient deficiency, and that gap will disturb their emotional behavior. So if we'll make the balanced food, bring a balanced diet to them and healthy diet. So diet should not like all the food grains from the different nutrient value. It should not contain all kind of groups. It should be balanced also. Means we know that jeera is very good for our health and all the spices. Because of the COVID, we came to know from the social media that all the spices are very good for our health, and that means not ki we will engulf it in any such amount. So that's why balancing is a very important, and the regular timing. If we will give food in a balanced way and in a regular, maintain the regular timing, then obviously it will change their emotional behavior and their mind also in a balanced state. If food will be balanced, obviously their mind will be in also balanced state. Thank you so much. Thank you so much. Sir, do we have time, or we want to wind up with questions? We do have time, but I do also understand that you have to go. And Okay. that's why I thought that let me take over and I will tell you what exactly. Because Jyoti madam has conveyed that she takes a little delayed. So what I thought is we have some questions directly from the audience on this subject for a short time, and after that we will ask you the candidates from YKI, Yoga Master and the dance team. They want to share anything. I think that we guys will also have snacks for the offline and online students. Online students taking the offline ऑनलाइन अपना ठीक है सर। अपना अपना डब्बा लेके आए। Okay, so I throw open this topic to the audience, online audience as well as offline audience. Roughly, I think what we have been talking on, how we have been dividing this subject is, I think, Himani madam has been talking about the physical aspects, the technical aspects of yoga. Sanjay madam has been talking about more about the mental aspects, family aspects, and Manishi has been talking about diet. If there are any questions on this topic, these specific questions on this topic, I will invite you. I think the mic here with me because there are now 3 minutes. So I was waiting for one minute. जो छोटा है अंदर बैठा है वो पहले से छूट गया वो आ ही नहीं रहा हमारे नहीं आ रहा मैं काम नहीं कर सकता. So any questions, audience? And if there are, I know yoga teachers के group में questions से ज़्यादा answer ज़्यादा रहते हैं. So they are more eager to talk about something. So I am inviting online people to speak on this topic, or if you have anything to share on this topic,
you can also share, or if you want to share anything about, first of all, let us talk about this topic. We have to be very specific about the new age issues which are faced by women. When I say women, it starts with children, it starts with children, teenagers, young ladies, mid-age, and older ladies. And then we will go to individual sharings, which I know there are a lot of people. Okay. So if you want to share anything on this topic or asking questions. Yeah, please. So, ma'am, as you told, कि आजकल बच्चों के when the kids are teenagers, even before they are teenagers, they are having a phone and they are using social media and all kinds of Facebook and Instagram, all kinds of social media even before the right age. So what about that small amount of number of children who are not being exposed to any kind of social media and they are not using the phone? When they are stepping out in the world, they feel lost because they have not been exposed to this kind of platforms. So, how do we kind of handle this kind of situation? How do I explain? How do we explain? It is somewhere in my concern, which I know need help. Very nice question, pertinent question, Neil. I remember when my daughter was given her mobile, she was in 7th standard. And there was a big halla bulla in her house. I was also not okay with it. But then we had to, because there are other children having it, and that, and her elder cousins in the house, they also made a big issue. How can uncle give her and all that? Anyway, that is a long story. अभी साथ ही नहीं 5 साल का 2 साल का बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है हाथ में. I think this is the society has changed, and we have to accept that the society has changed. When we were growing that time, there was one childhood, बचपन प्यारा सा नन्हा सा, वो सब अभी नहीं रहा है. We have to accept it. So society has changed, and I am going to bring up my child in the current society what is. Okay. So trust the values that you are giving your child, because everything is calling all of us here are in the yoga forum. हम सबको पता है कि इसका हमारी हर कृति का संस्कार बनता है. तो अभी मोबाइल हाथ में दे रहे हैं तो उसका भी संस्कार बनना है. सो अगर ये एक संस्कार जा रहा है तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको और पॉजिटिव संस्कार भी दे देना है. Only if the child knows that this option is also there, he will look for it. Yeah? So, mobile is something or internet or any other. अभी जितने सारे प्रलोभन हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? मुझे उसकी तरफ खींचते लेके जाते हैं. So that is one impression that we are unfortunately creating on our children. So the other impression that we can create is also a very conducive, positive environment in the house, where you are inculcating a habit. अगर आप तो कर ही रहे ना, बच्चे को टाइम पे सुलाओ, टाइम पे जगाओ, उसको ब्रश करने को सिखा ही रहे, तो अभी ब्रश के साथ साथ उसको जल्दी सिखाओ, उसको कपाल धोनी सिखाओ, उसको कर्ण धोनी सिखाओ. ऐसा कुछ सिखाओ जो उसको उसकी corresponding एज में वो कर सकता है. And that is creating a sanskar. You know that sanskar is extremely important, because all of us appreciate and understand if I have done any activity, it's because my mind had a desire for it. But वो desire कहाँ से आ गई? कि उसको conditioned sanskar was there. It was waiting for an opportunity to come forward. And don't be anxious. हम लोग है ना बावले भी हो जाते हैं, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, because
we see so many negative things that are going in his mind. और इतना डेटा डाउनलोड हो रहा है बच्चे को एंड यू फील कि ये क्या कर रहा है, उसको क्या क्या दिखा है, देखने दो, वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, if you are unmoved, your child is going to become that and nothing else. Thank you. A very pertinent question. I would like to add something over there. That was very nicely put by her. I think freedom has to be real. Today's children are, they will not accept binding. They never the children were wanting binding. Even you did not like any binding. Freedom and liberty is required. But when that liberty and freedom is balanced assessment very rightly with the right sanskar. So when the right sanskar that when you are giving something on liberty, when you are having nuclear power, when you are bound by something, some rule, you cannot use for this purpose. And if you are using for this purpose, there is a consequence to it. And that consequence is explained explicitly. That becomes a barrier for the child not to cross it. We should know what is good and bad. If you are hiding what is good and bad, be curious about what is bad. You have to tell it what is bad and what is good. He's curious. Child is curious. उसको पता करना है ये क्या है, ये क्या है. अगर उसको आप वो curiosity उसकी समझ करें, उसको पता है कि what is good and what is bad, what is you are belonging to a good word and this is the bad word, you are not go there. This is explained very explicitly, I think. Yeah. Any other questions? Yes, sir, please. महिला वो तो यहाँ एक महिला का पार्ट है, हम बिजी है कि हम हमेशा और लेडीज का देखने ज्यादातर बच्चा छोटा है वो पकड़ रही है आजकल की जो माताएं हैं जो कन्वीनियंट, इट इज कन्वीनियंट टू यहाँ से ही शुरू फिर वो बच्चा नहीं वाला आप करने वाला है क्योंकि हम अपने फ्रीडम से वो ये चीज है तो वही रोकना है ये ठीक है टाइम भी बताओ कि आप साथ में रहो तो गेम खिलाने का नाम साथ में फिर अभी तो इतना टाइम है या ये उसको ऐसे वो ये एज में भी हम चले जाते सोशल मीडिया पे थोड़े टाइम मेरा पिछला एक्सपीरियंस मैंने एक घंटे का फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में सेट किया था मुझे नोटिफिकेशन आता है या फिर एक घंटा पूरा दिन का एक घंटा हुआ आपको और देखना है कि नहीं देखना तो यहाँ पे हमें डिसमिस करना है या उसको प्रतीक करना है बच्चों को ये चीज पहले करनी चाहिए और इसलिए तो हमारे योग में तो चिल्ड्रन के लिए संस्कार केंद्र है और हर भी संस्था जो संस्था क्रिएट मंचूर टाइम पे करना और हमें टाइम मुझे याद है हमारे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर शेखर हमेशा बोलते थे 11 साल तक महिला जो माँ है वो पूरा समय बच्ची को 11 साल के बाद वो वही संस्कार साथ जो दिए हुए संस्कार के साथ नहीं करने वाले मालूम रहेगा जैसे सर में टाइम और क्या कितना टाइम मुझे यहाँ देना है कितना टाइम बहुत जरूरी है बच्चा शांति से बैठेगा मैं पता पहले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. So anyone else if any questions are there on this topic? I know all of you are eager to get your certificates, but if
If you want to get certificate, you can take the certificates now. But if you want to take certificate from the corporate and take the photograph later. But in the meanwhile, I am proposing to our administrator to have serve the snacks also. तो बाद में करने से हम लोग snacks कर लेंगे तब तक if there are any sharing, if there is any sharing on anyone, I will. Virtual snacks. Virtual snacks. Yeah, I think that we can close that topic and the new way you should because we nine teacher new way go ya old age go. Just prove that new way go ya old age go they are strong. So I will invite while the snacks is going on while we are waiting for our operator to visit. I will request if anyone has anything to share about their teachers, about the courses, about what you are going to be presented to सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है, उसके बारे में अगर आपको कहना है, और लेकिन मैं उसके पहले जो करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं, because there are some people who are at the entry point जो YPI कोर्स करके भी सर्टिफिकेशन बैच 28 का लेने वाले हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, and there are some teachers who are here who are waiting here for the yoga master certifications. So I'll tell you what is the journey like, what are the different courses which are available not only in NAI, it's offered by the YCB, and what are the other courses which NAI is offering. So yoga protocol instructor is the first level. Then after that you go to the yoga wellness instructor. Yoga wellness instructor is you can say that it qualifies you to teach theoretical topics like Trigona is there, Panchbhuta is there, these kind of topics are there, and the theoretical aspects about the practical also empowers you to teach these topics. The third level is yoga teacher and evaluator. ये teacher और evaluator जो है ये आपको empowers you to become an assessor. So जिससे आप एक examiner भी बन सकते हैं. You have the knowledge of how to assess even the institutes. I'll be very happy to tell you that in this scenario, Himali madam is one of the teachers who is maximum. She is assessing the institutes. Myself, Sanjay madam also, we have done a lot of assessments all over the country, and so these kind of opportunities are there. There are other opportunities like being examiners. Many of the teachers over here are being examiners. Ramanji sir is a senior examiner, lead examiner. Manju madam are also lead examiners. They lead examinations, assessing for examinations. Kalari madam has been an examiner in past, and Anjali has been an examiner for a couple of exams. So Anugada is established examiner now. Jaya has started examining. So these are the opportunities. So what's so great about that? It's a ladder. ये एक ladder है. आपको एक ऊपर जाने का रास्ता है. तो ऐसा नहीं है कि आप examiner करके तो आपने पूरी दुनिया ऐसा कुछ नहीं है. But that is ladder which has been given to you, structure which has been given to you by the yoga certification board. तो ये स्ट्रक्चर में आप यदि ग्रो होंगे तभी आप देखेंगे ना आप योगा मास्टर में गए हैं, योगा थेरेपिस्ट बने हैं, योगा थेरेपी कंसल्टेंट बने हैं, तो आपने सही में आपके पास कुछ नॉलेज, आपके पास सही में अगर कुछ नॉलेज है तो आप वहां पे it's like just like any other course, like we have over here Madhura there. She is a master in physiotherapy. So what it means is she has gone to the 12th, she has done her bachelor in physiotherapy, she has done her, and then she has specialized in something. So she is certainly a master and she knows her subject very well. That proves that. So that is exactly what this whole ladder and this structure of which has been given by yoga certification course. So इस structure में आपको
एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि मैंने ITI बंद कर दिया, मैंने वाइस प्रेसिडेंट कर दिया, मैं तो सिखा रहा हूँ, तो आगे मुझे कुछ करना नहीं है. That is where the trap is. The trap is over there because yes, you have certainly taught and it is very essential step. आप जब ITI बनते हैं, आपको आपका ड्यूटी है कि आप कहाँ जाके लोगों को सिखाओ, किन लोगों को सिखाओ, जिनको फिटनेस सीखना है, योगा वैल्यूज सीखने हैं, जिनको मैनेजमेंट ऑफ सुपर डिजीजेस लाइक ओबेसिटी इज देयर, डायबिटीज इज देयर, हाइपरटेंशन इज देयर, ये सब के लिए आपको योग कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सब आपको डेफिनेटली सिखाना है. बट दैट इज नॉट वेयर द योग एंड्स. You can say that is where the yoga starts. Unless you have been exposed to the theoretical concepts like koshas are there, trikunas are there, you have been taught about the jnani yoga, you have been taught about the bhakti yoga. Probably those are the sections probably you wish, or maybe you left it in option also in your studies. हो सकता है. But I tell you that these are the things which is going to take you ahead, and that in the real life that is what is going to be used. तो इसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं. ये जो थियोरी है ये नेसेसरी है. आपको ये जो ज्ञान बांटते हैं लोग इतना अथॉरिटी के साथ में, दिमागी मैडम इज सेइंग, संजय मैडम इज सेइंग, और मनश्री वाज टॉकिंग, it is all coming through studies because of the grill of the studies they have gone through. So I think my invitation to you is look at these courses qualitatively. Okay. So I would want to invite people who would like to talk more about the subjects they have learned over here, or about the faculty. I forgot to tell you about the faculty also. You, as you grow up, you become faculties in the Nai Institute. Also, we have Ina, we have Pratibha, yeah, we have Kalani, who is already a faculty. Sanjay is a faculty. So there are teachers who have grown on this ground. When we started, we were only 2 of us. Raman sir is a super boss, super teacher. So we always look forward to this because he has come with a lot of knowledge, but I'm sure he has picked up a lot, and I'm sure he wants to contribute a lot to this institute also. So I will invite anyone if you want to speak anything about this thing, about the faculty over here. Minister, कहेंगे तो नहीं, क्योंकि क्या सब देख लेना तो थोड़ा सा ओवरवेट हो गया वहाँ पे. I'll invite after you. I'll invite Kalani. जय श्री राम. जय माता, जय विमल. Okay, I was just listening very interesting topic and discussion, especially on women. So I started thinking, everybody thinks that a woman is someone's wife, someone's mother, someone's daughter, someone's sister, right? I want to ask you, is this a good thing or a bad thing? Think before answer. Right? Huh? Okay, everybody, even women themselves. Think of a woman as someone's wife, someone's mother, someone's sister, someone's daughter. So is that a good thing or bad? Very good. Really? Why can't you think of woman just as someone?
Why do you want to give her boxes? Why do you want to put her in identities? No, why do you want to give her boxes? Why are you repeating her? Just think of her as someone great. That is the start of the problem. Of thinking of woman in terms of boxes, in terms of identity. That's my way of thinking. Regarding your pregnancy, I have to say it's the best because I am one of them. But seriously, Mary has got a wonderful program for grooming their people. The people who are passing out, they don't have to look anywhere else. Where will I get experience? मैं कैसे सिखाऊंगा ये सिखाऊंगी या गवर्नर कैसे बनूंगा क्या बनूंगी इधर ही सब कुछ मिल जाता है one by one they keep looking stay with the same board right favorite duration nothing they give equal chance to everybody इधर और इधर with them ये तैयार हो गए looking out करते हैं looking out करते हैं so everybody comes up you don't reach a dead end in me it is always an open gate ये आपके ऊपर है कि आप कितना आगे बढ़ना है the opportunity are all given Himani from Nayi, I am from Nayi, Kalyani is from Nayi, so many of us are here from Nayi and both just one are from YPI, YWI, like that. Slowly. For some of us, the journey has been fast. For some, reading is slow. But remember one thing, in the journey of yours, it may be slow or fast, but everybody progresses. There is no staying still. And my best wishes are always with me and the students and faculty that they continue to grow steadily. My best wishes and best. Thank you. Thank you. Please. Before giving up I just want to give you the name of breastfeeding organization. It is breastfeeding. It is a very good organization. Breastfeeding Promotion Network of India, Maharashtra State and State Branch. So you can Google for this organization and get more. One thing. Sanjay was talking about sanskar, so I must also do my sanskar too. These संस्कार हमें मिलते हैं यहाँ नॉलेज में बन जाए लेकिन हम हमारे जो गुरु है उन्होंने हमें योग की तरफ भाव की तरफ ढाला है उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं मैं जब यहाँ पे आई इंस्टीट्यूट में जो नई में 2015 आई थिंक फर्स्ट सेकंड तभी ऑलरेडी मैं सीख रही थी और सिखा रही थी 1997 से सिखा रही लेकिन यहाँ पे आके कुछ चेंज लगा आसन प्राणायाम के ऊपर भी कुछ है तो ये हमें सीखना है ऐसे सिंगल की मैं अपनी बात करूँ तो कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं जो लेक्चर देती हूँ और जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं वो भी मेरे से काफी नॉलेजेबल है मैं एज ए फैकल्टी मैं अपने आप को कभी भी इस तरह नहीं मानती हूँ कि टीचर हूँ और सिखाने आई हूँ मैं सीखने आई हूँ सिखाने आई हूँ और मैं शेयर कर रही हूँ नॉलेज में बस और एनवाई की टीचर बन के तो किसी को भी अच्छा लगने ही वाला है सेकेंड थिंग महिला दिवस तो महिला दिवस हम बहुत जिम्मेदारी लाते थे महिलाओं के ऊपर कि आप महिला हो आप स्त्री हो आप काम है घर संभालना बच्चों की देखभाल करना सबकी देखभाल करना लेकिन उससे बियॉन्ड जैसे समय वाला आप स्त्री हो बेटी हो उससे आगे क्या है
तो मैंने एक छोटा सा कुछ लिखा है जो मेरी हैबिट है और मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो उसके लिए मैं लिखने जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी काफी जर्नी जो योग जर्नी की है उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज होता रहा है कि अपनी हस्ती को बदलो, कितना भी हो अपनी हस्ती अपना नाम को बदलो। तो उसके ऊपर मैं बोलने जा रही हूँ। सब कहते हैं कई नाम है तेरे, तू निभाती है कई रिश्तों को बाखों की। कोई तेरा चित्र बनाए 10 हाथों वाला, कोई पुकारे तुझे महान देवी, करे तेरी तुलना दुर्गा माँ से, कोई कहे तुझे सुपर वुमन, तो कोई कहे तुझे ममता की मूरत। ये सब सुनकर कभी तो हो जाए खुश, तो कभी हो जाए तुझे अपने पर मान। तू गृहिणी है, माँ है, पत्नी, बहू, बेटी, बनी रहकर भी खुश रहे। ये कहे मेरा घर ही मेरी दुनिया, बाहर की दुनिया से मुझे क्या काम। ये तेरी मर्जी, तेरी ही इच्छा सही, लेकिन इन सब के साथ अपने वजूद को तो भूलती जाए, ये ना हो, ये रखना ख्याल। जिंदगी बहुत बड़ी है, सारे किरदार को निभाने की, पर एक किरदार खुद के लिए तो रखना संभाल। सारे किरदारों के बीच अपनी हस्ती को भी देते रहना तू मान। अपने नाम को तो रखना याद। सीता, अहल्या, दुर्गा, झांसी की रानी होगी तू, जीजा मान, और बनी भी रहेगी। पर तेरी असली पहचान को ना खोना, जो है तेरा अपना नाम। अपने नाम से, अपने आप से, अपने वजूद से करते रहना प्यार। देते रहना अपनी सेहत, अपने विचार, अपनी इच्छा, अपने सपनों को तू पानी का हल्का सा छिटका, जैसे देती है तू पौधों को पानी और खाद। नियम है दुनिया का, जो खुद करे प्यार अपनों से खुद से, वो दूसरे से कैसे ना करे प्यार। आज की नारी जरा याद रखना ये। तो ये सिर्फ छोटा सा एनकरेजमेंट है जो हाउसवाइफ अपने आप को लिमिटेशंस में बांध देते हैं कि वैसे नहीं हो पाएगा। हम इंक्वायरी आती है क्लासेस के लिए, कोर्सेज के लिए, टाइमिंग बताते हैं, नहीं बच्चे का खाने का टाइम है, स्कूल का टाइम है, यस है ना, मेरे हस्बैंड का आने का टाइम है, मॉर्निंग का क्लास सजेस्ट करेंगे तो अरे मॉर्निंग में तो कैसे नहीं, उसको उठना है, चाय पानी देना है, नाश्ता देना है। इसी में कहीं हम अपने वजूद को भूल जाते। हम अपना ध्यान रखने के लिए काबिल है और दूसरों का ध्यान रखने के लिए बहुत काबिल, लेकिन हम अपने आप को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो महिला दिवस यानी हम अपने आप को एम्पावर या दूसरों से ऊपर उठाने की बात नहीं करते, कम से कम उनके साथ चलने की बात कि उनका टाइम वो संभाल लेंगे, उठेंगे, अपना ब्रश करेंगे, वैसे ही वो अपना चाय बना लेंगे, खाना खा लेंगे। आपका ड्यूटी है आप बराबर अपना तैयारी करके ही करें। खाली परोसना जरूरी नहीं है, प्यार से खाना बना के उनको सिर्फ बोल दो खाना रेडी है, मेरा क्लास का टाइम हो गया है, मुझे करना। मैंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, मैं सर हम जो भी टीचर से उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। सुबह 5 बजे निकलते थे, दोपहर में 3 बजे वापस आते थे और मुंबई की लाइफ, लेकिन उसमें खुद का ग्रो करने नहीं हुए, अपना खुद का ग्रोथ नहीं हुआ। लोगों को संभालना, रिलेटिव्स को संभालना, सास ससुर को, बच्चे को, हस्बैंड को संभालना, वो बहुत बड़ी ड्यूटी है, लेकिन खुद की तरफ क्या, खुद की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जब हाउसवाइफ फोन करके बोलती है मेरा डिप्रेशन आ रहा है, मेरा मेनोपॉज के टाइम से मुझे ये गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है, मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनके फ्रेंड्स के साथ उनको ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड बिजी है, कोई बात करने वाला नहीं है, डिप्रेशन में जा रही हूँ। कभी तो ये बोलते हैं ना, एक घंटी बजनी चाहिए शुरुआत से। और मैंने भी शुरुआत से, आपको मालूम है कि मैं स्पोर्ट्स में थी, उसके बाद 24 साल की उम्र में योग सीख लिया। जब शादी हो गई थी, बच्ची छोटी, अगर वो बोला 3 घंटा आप संभालना, 6 महीने की बच्ची को संभाल के मैं योग सीख रहा।
और उन्होंने मुझे दिया और हम पूछेंगे नहीं तब तक वो हमें बताएंगे नहीं कि यस मैं संभाल लूंगा, क्योंकि ये है थोड़ा यहाँ पे लेकिन हमें बताना है कि मेरे सपने हैं, मुझे कुछ करना है, ये जीवन मिला है तो मुझे कुछ तो करना है अपने लिए। खाने की बात अलग है कि मुझे सीखो तो सही है ना, तो सीखने जाने के लिए तो हमें थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो यही मुझे कहना है सारी में हम अपने लिमिटेशंस से कभी बाहर आएंगे तभी स्त्री महिला सशक्तिकरण की रियल वैल्यू हमें एम्पावरमेंट बोलते हैं, लेकिन यही सब अपने आप को थोड़ा खुद को सोचो, खुद के लिए कुछ सोचो, सेल्फिश मत बनो, लेकिन थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए। अभी मेरे एज जो मेरे साथ में रहा है क्यों ना कल ही बर्थडे गई तो अभी 52 शुरू हो गया, लेकिन मेरे एज की लड़कियों को लेडीज को नी का इश्यू हो गया है, यूट्रस निकालना पड़ा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स और टचवुड हमें अभी कुछ नहीं। मन अच्छा रहेगा, हिमांगी ने बोला मन अच्छा रहेगा तो शरीर अच्छा होने नहीं वाला है, रह नहीं वाला। और अभी मेरी बेटी एक ही है, यूरोप में है, मुझे अकेला का नहीं लगता क्योंकि मेरी दो फैमिली बहुत बड़ी करती और खुद के सामने में अकेली नहीं रहती हूँ, मैं खुद के साथ कुछ कुछ करती रहती हूँ। और वो क्रिएटिव माइंड कहाँ से आया? योग से आया। लेक्चर के दौरान फैकल्टी को लेक्चर के दौरान ये सब बोलती हूँ, मैं थोड़ा फोर्स भी करती हूँ, निकलो निकलो करो करो, और यही तो है हमारा काम, है ना। अपने लिए पूरा टाइम निकालना जरूरी, और जब अपने लिए टाइम निकालेंगे तभी खुद ने अपनी लाइफ जी है, वो एक सेटिस्फेक्शन आएगा जब हम 3/6 की उसमें पड़े होंगे। तो पहले ही 3/6 को चूज करो, क्या योग में वो 3/6 है, वो भी 3/6 है, ये 3/6 पे जीना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 3/6 के टाइम पे ऐसा लगेगा हाँ रिलैक्स से कुछ सब कुछ अच्छा लिया और निकल गए, है। तो एक छोटी सी चिंगारी अगर अपने दिल में जागृत कर ली हमने कि मेरी लाइफ में अपनी तरीके से थोड़ी बहुत जीऊं, दूसरों का तो बहुत मान के आई हूँ कर देगी, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए ये अगर एक छोटी सी जिम्मेदारी हो गई तो वो बड़ी ज्यादा लगेगी आगे जाके, जबकि आपको लगेगा मैं अकेली हो गई हूँ, वो कभी नहीं। टीचर होने वाले और नए टीचर बनने चाह रहे उनको भी यही हमारा स्टूडेंट को यही सिखाना है, डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं आएगी अगर योग को बराबर रखना है। Thank you very much. Very, very important points. बहुत ही important points you have shared. And I have, yeah. Can I tell them? Yeah. Because I also said the name of the organization. You know, I have been part of this organization, Breastfeeding Network of India as well, and Dr. Gangal is very active in that. They train whoever is interested. They train them. It's all free, volunteer. I mean, I've learned from them, and just saying that we have our own nursing home, so breastfeeding is very successful. My husband's station is a time. Why? Because before the delivery, we give them lecture on breastfeeding, 2 hours lecture, preparing them for breastfeeding. And let me tell you very proudly that 80% of the mothers are successful in breastfeeding. Why? Because we tell them about the advantage, benefit of breastfeeding. It is to both mother as well as child. The benefit is huge. And when we talk about it, they themselves are interested in breastfeeding. It is like 2 hours after that. We also call the mothers-in-law with them because उनकी mothers and mothers-in-law because उनकी support बहुत जरूरी है feeding देने के time. So all the problems that they can face, everything is told to them. And then after delivery, again, not because it's my nursing home, but even anyone, they are ready to come and again teach them to breastfeed. So if you are interested, Breastfeeding Network of India,
You can go on Google it, and you will get the numbers and they help. Also, if you want to take training, they do that. Super amazing. What benefits, my God, it's really fascinating to know that because WHO and UNICEF they have done research on this, and they have come up with the benefits of breastfeeding. And August first week is the month for breastfeeding. Breastfeeding month, week for this. Anniversary always. So it is very good. So please, if you are interested, you can do. Thank you. I think Jyoti madam will be here and that's why we are just preparing. What we will do is we will take the YPI certifications first and then we will go to the dance team and then we will do certifications for the yoga master. But before that, and what Kalyani told, I struck a chord this will be, and I'm sure Sanjay will also speak to that. Kalyani, thank you for bringing up that point, Sangeeta. Thank you for your stopping our gossip. Yeah. Yeah, so it's a home. I don't mind that. It's like a so yeah, I think this is especially I know जो मतलब एक्सपीरियंस टीचर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो नए टीचर है ना उनके लिए ये खास बात बहुत ध्यान में है आई एम श्योर पायल ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट you because you are a teacher you are an experienced teacher and you know how to take care of the family when you go to teach but those who are अभी नए हैं उनके लिए ये बात बहुत जरूरी है you have to train your husband is it not absolutely I must tell you, when I went for teaching yoga, Nitin sir used to tie flats to Mohan going to school. मैं वही बोलने वाला था कि मैं कब ये करने लगा मुझे ही पता चला because वो मतलब और हर क्लास was so important I mean of course सही है वो and her profession she creates you have to create a value around your profession हल्के में मत लो आपने अपने प्रोफेशन को हल्के में लिया you are doing a great service to the society however qualified and however whatever business or post your husband may be उसका उसके पास हमारी है कि नहीं उसका उसके पास मेरा प्रोफेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये मेरा टाइम है अगर तुमको 9 बजे ऑफिस से निकलना है तो 7 से 9 मेरा टाइम रहता है टू टेक केयर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग दैट टाइम तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये करना ये आपके फैमिली वालों को ट्रेन करना उनको एनरोल करना इस बात में बहुत ही इम्पोर्टेंट है because I really what she breaks in is right for so many years so I'm an expert at taking gigs मैं Mona was very small I think she was 3-4 साल 5 साल And lucky she didn't know whether it is good looking or bad. तो ये मालूम नहीं था कि वो ऐसा करता है कि नहीं करता है शायद जाके अपने फ्रेंड्स की बात बोलती होगी कि मैं पास को क्या कर रहा है ये सब ना वो तो तुम्हारी मम्मी करती है अच्छा होगा हमारे घर में कोई so let it be as casual as that let's not build a big value around that okay तो नहलाना खाना खिलाना ये सारी चीजें जो है ये आपके हस्बैंड को भी सिखाओ सर आजकल जरूर नहीं करती अभी आजकल और फादर्स आर वेरी हां ये नहीं हां हम 27 साल पहले अभी तुमको बताने की जरूरत है अभी उल्टा थोड़ा लड़कियों को बताना पड़ता है कि भाई थोड़ा काम घर में भी करना होता है अभी यहाँ पे चल रहा है जरा थोड़ा करते हैं तो ऐसा बोलना पड़ेगा बट that is the reality because unless unfortunately ये वाईसीपी के कोर्स में इनको नहीं किया है मेरा 10 चले मैं अगर वहां पे जाऊं तो मैं डेफिनेटली ये सब्जेक्ट इसके ऊपर रखूं कि कैसे फैमिली को एनरोल करना है कि आपको आपका प्रोफेशन सीरियसली लेने के लिए आप क्या करना चाहिए फैमिली इतना सब सिखा दे और अगर आप सिखा ही नहीं पाए तो फिर क्या फायदा क्या है करना पड़ता है you
trying to give. I'm sure senior teachers like Anuradha has been teaching for so long. I'm sure all these teachers and Hemangit that they have been busy in the morning. Mornings तो इसी में जाता है तभी आपका घर पे कौन है ये अगर आपने मास्टर कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आईपीएल आई मास्टर कुछ नहीं कुछ आप पहुंच जाएंगे तो जी always so with this I want to start that video so that as soon as she comes for the dance video is kind of Jyoti ji arrived. Namaste Jyoti ji. Please settle down. So thank you for being here. And as you settle down, we'll take some few breaths. We are going to run some video of a dance. You are also a dancer, so you will appreciate that. So this was something which I don't think you understand. I think so. That will be great. आमच्या डान्स टीमने परफॉर्म केलेला आहे सो यू विल एन्जॉय टू सी दिस आप सुख दुख से लगूं न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ न भोजन न अनुभव न भोक्ता जगत चेतना अनादि अनंत जगत चेतना अनादि अनंत ना मृत्यु का भय है ना मतभेद जाना न मेरा पिता
sorry, offline people, this was more for online. I will put it again on the bigger monitor so that you can hear it also again. Yeah. I understand it. Yes. This is Kalyani. But of course, ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार ना दिव्या नयन नासिका कर्णद्वार ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार ना दिव्या नयन नासिका कर्णद्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु ना मुझ में घृणा ना कोई लगाव ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव धन धर्म काम मोक्ष सब प्रभाव मदन राग गुण दोष विषय पर्यंका जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ न मंत्र न ध्यान न दीप और यज्ञ हूँ न भोग न भोजन न अनुभव न भोगा न मृत्यु का भय न मत भेद जाना न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा निराकार साकार शिव सिद्ध संस्कार जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता Thank you very much, everyone, for patiently listening to this.
So, without wasting much time, I'll quickly request Himangi Madam to introduce formally our chief guest, Mrs. Jyoti Aramni, who is the corporator of this ward and our dear friend, and been associated with us since long time now, many years. नमस्कार। यहाँ की जानी मानी कॉर्पोरेटर मिसेस ज्योति अरावणी, प्रभाग क्रमांक जो होता है वो 85 नंबर का उनका विभाग है। तो वह अगले 10 साल से नगर सेविका यानी कॉर्पोरेटर रह चुकी है। विलेपार्ले में ही वो पली बड़ी हुई और वहीं पर काम करती है, और इसीलिए उन जो भी कुछ परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं वो हैंडल करना और उसके लिए अच्छी तरह से उत्तर ढूंढना, ये उनको बखूबी आता है। कॉलेज के जमाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहां से ही उन्होंने सामाजिक कार्य करने की धुरा मतलब प्रण किया और तब से उसी से जुड़ गई। स्त्रियों के प्रश्नों पर भी उन्होंने, स्त्रियों के समस्याओं के प्रश्नों पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वहां पर काम किया। फिर उन्होंने वैसे तो फॉर्मल एजुकेशन कॉमर्स का ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने सेक्रेटरियल कोर्सेज भी किए हैं। भरतनाट्यम और कथक विशारद रह चुकी है वो। और उन्होंने उन्होंने योग अभ्यास, योग शिक्षिका का पठन भी किया है। फिर 12 वर्षों से वो लगातार लेखन यानी राइटिंग करती आई है। और जैसे वेरी गुड, जैसे कि अब सोशल मीडिया पे भी वो ब्लॉग लिखते रहते हैं, हिंदी और मराठी में लिखते रहते हैं। उनका एक स्टोरीज का एक बुक यानी कथा विविधा, इस पर एक बुक भी आया है। और एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने तैयार की थी 2021 में, और उसको बहुत सारे फेस्टिवल्स में 4 अलग-अलग किस्म के अवार्ड भी मिले हैं। बहुत ही मतलब भाग्यशाली है कि आज के इस मौके पर हमें ऐसी बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही हर एक क्षेत्र में अपना मापदंड उठाने वाली और बहुत ही फेमस ऐसी व्यक्ति हमारे इस फेलिसिटेशन के प्रोग्राम में मिली है। तो मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उनके मतलब बहुत सारे कार्य में व्यस्त होती हैं, फिर भी हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ खुद पधारी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Thank you very much for the good words, kind words. Himangi Madam, Himangi Marathi is one of our most senior most teachers, and I will request Sandhya Madam to please welcome Jyoti ji formally. Thank you very much. So I'm sure she will like to say something, but I will give her mic after we finish our felicitation. So she can have the freedom to choose her time, duration, how much she wants to speak.
And I'm going to give you one very good news, which is that Miss Alavani, Shivani Alavani, her daughter, has just got herself admitted for the YPI course. That's 31, starting in April. So, as a family also, I know they are very much committed to yoga. Jyoti ji herself, she is a yoga teacher. She knows the value of yoga education. Her daughter has been our student. One of our teachers has been teaching her. And now another daughter, her elder daughter, is taking up the course. Paragji himself, he has been very, very supportive. If I can say that this entire structure which is there, which is made available to us for the classes, and the support which we get from Paragji is phenomenal. And without his support, we wouldn't have been able to make this organization. So I would like to start the felicitation with the dance team. Okay, so the beautiful ladies who danced over here are already here. So my एक को, हाँ? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा. So I will start the dance scene with Kalyani Madam. She was heading the dance team. She is the head of our cultural team, and she's been instrumental in setting this dance. Kalyani Thakkar was ably supported by Pratibha Patel, herself a very good dancer and a very experienced teacher herself. They are not able to view, madam. अच्छा. थोड़ा सा हाँ. Yeah. Then we have Sangeeta Agarwal. Sangeeta is from Parla only. Thank you. We have another senior teacher, Anuradha Nichani. Thank you. And we have Minal Jain. Himali Safi. Hina Jain. Hina is from Parla too. And Usha Mohite, our administrator. Thank you. So with this, we will move on to the certifications. Usha. YPI certifications. So YPI is Yoga Protocol Instructor. Yoga Protocol Instructor is a 200 hours course in which this is designed by the Yoga Certification Board, Ayush. And in that we teach the theoretical, practical aspects starting from the Shuddhi Kriyas, Sukshma Vyayam, Surya Namaskar, Asana, Pranayam, Mudra, Bandha, meditation, and the theoretical aspects of it, the principles of asana, pranayam, etc. Hiranya Samhita, Hatha Yoga, Pradipika, Yoga Sutras, Patanjali Yoga Sutras, and so on. So these teachers who have just passed out, they are now ready to go into the field and teach the authentic yoga
to the society. So I'll start with Anushri Mehta. There are two certificates. One is Government of India certificate right from the Ayush, and another is our institute certificate for course completion. Deepika Shah. Dipali Gorule. Madhura Joshi, again one parliament. Ayal Shah. Thank you. Thank you. Shashank Jain. We have less male students, but we have many who are till now we must be having at least 50 to 60 male students, male teachers, but they are very good, very serious students, serious teachers. Adishri Mare. Adishri is also a young student from Villikar Lane. Thank you very much. With this, we come to the third section, which is Yoga Master. So, Ayush has got a very structured approach. There are 4 levels of certifications. If you remember, there is one newspaper cutting out there that New Age Yoga Institute in 2016 April was the first institute all over India to have this conduct these teacher training courses for QC at that time and Ayush courses. And that time we had got a record of 100% attendance, 100% result of the where others were faring something like 20-30% or 50-60%. Even the recognized institute that time we could have that because of small institute and the quality of education and the personal rapport, it was possible to have, get that kind of result. And now, till now, we have a record of whatever levels Ayush is and QCI is introducing, like yoga wellness instructor is the second level, yoga teacher and evaluator is the third level, and yoga master is the fourth level. So in the yoga master also, we are one of the first institutes all over India to bring out yoga masters as certified master teachers. So every time we dig a well and then people go and fetch the water. It is like that. So the digging of the well is always a difficult task, but we have always taken up challenges. So I will request all the teachers who have, if they have already got their certificate, but I will ask them to come and starting with Anjali Saravate. Yes, congratulations, Anjali. In a short time, she has completed her level 1, level 2, level 3, and level 4, and she is doing an MA also along with us now. She will be very soon completing an MA Yoga Shastra. Himangi Marathi, madam. Himangi Marathi is also partly right now. Now we have Ramanjit sir, who is our grand young teacher, and he's been a very good support to us throughout, and always a guide to us, but always studying along with us. So Ramanjit sir.
our Nai Pitama. So now the next candidate is our favorite and Nai really rocks, Nitin Patkisan. Yeah, that's very nice. Thank you very much. Learning never stops. We'll call you again to give more certificates. And Mrs. Sandhya Patki madam. Happy congratulations. Thank you very much, Jyoti Dai. So, it is very evident that learning never stops. This is a lesson for the people who are now here who just finished their YPI, that Sandhya after 27 years and Hemangi after 35 years and me after 12 years and sir after 25 years, we are still learning. So the learning never stops. It is always a continuing job. So without taking much time of Jyoti madam, I will request you to share a few words of whatever you feel like on this auspicious day and in this auspicious occasion. Thank you. आज के इस महिला दिन के अवसर पर आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं and thank you Mrs. and Mr. Patki to invite me here, and it's great pleasure to actually give you both certificate. Definitely after 18-19 years back I did my yoga course from the Yoga Institute Santa Cruz. I was teaching for another 4-5 years, and then I left, and now I'm doing it for myself only. So I more call myself a teacher, because as you said, it is a learning process always. And I'm more into the learning process now. Whatever I learned, I just practice that. Having said that, a few corrections. I'm not from Parle. I'm basically born and brought up in Santa Cruz. Just before marriage, stayed for 1 year in Jogeshwari, and now a Parle for the last 28 years. So definitely more than my previous life, I am in Parle. But still, I think Parla has a different culture, as we all know. We are like a family in a way, and so have I have realized it last 10 years. It is a pleasure to serve everyone. आणि technically सांगायचं तर काल आमचे टर्म संपली आहे टेक्निकली, आणि आज कसं बघायला गेलं तर मी नगरसेविका नाहीये, पण पार्लेकरांचं सोबत प्रेम एवढं आहे की नक्कीच निवडणुका किमान होईपर्यंत तरी अजून जे काही महिने असतील ते मला willingly I will serve you all and definitely available me and Parag always. भरतनाट्यम कथ्थक ही माझी आवड होती. लग्नानंतर शिकले, माझ्या मुलींबरोबर विशारद झाले आणि माझ्या मुलींबरोबर अरंगेट्रम केले मी. All that about me. And then, this as sir said, जेव्हा इथे सुरू झालं होतं त्यावेळेला मला वाटतं काय परिस्थिती होती तुम्हालाच माहिती आहे, पण तरी तुम्ही सुरू केलं. कदाचित त्या तुमच्या इनिशिएटिव्ह मुळे आज जर का डॉक्टर हेडगेवार मैदानाची जी एक सुंदर वास्तू उभी आहे आणि छान आहे ती टिकली आहे, ती तुमच्या सगळ्यांच्या एफर्ट्समुळे. याचं खूप कौतुक आहे. आणि last but not the least, all of you definitely are doing great job. Yoga is a way of life, and I have practiced it for my life, so I know it very well. Excuse me for my voice, but काल आमचे आंदोलन होतं त्यामुळे पण it's a way of life definitely, and it's very calming. Especially now that I am going through in your menopausal period and especially hormonal changes, it helps you a lot. I have experienced it definitely. Eventually, girls will feel it that doing it regularly means a lot. सगळ्याच प्रकारच्या आपल्या बॉडी जे काही चेंजेस असतात that we can accept very well only if we are practicing yoga. And
meditation definitely helps a lot. And you said Parag has also done one meditation course. I don't know from where he did. He did one course, and he also practices very simple yoga asanas at home every day. So my younger daughter learned it from Purva. Yeah, she was coming and she taught Sanya still whenever she gets time she practices that. And elder daughter she wanted to learn, and now that she has a time she has joined the course. So definitely this is the best course that you are doing for your own self, and eventually you will help others. All the best to all of you. And the best dance that I could see, that was amazing, done very well. I felt very nice to see that. Thank you so much. Thank you so much, Jyoti, for sharing your wonderful words and all the kind words. So, looking at her and looking at Farah and the family, there's no need to say that not only physically but mentally, and they are very, very compassionate people whenever you meet, and the kind of balance which Parag has in all kinds of situations. I've been observing him. Definitely, he should be a student of meditation also. So thanks a lot for coming. I will not take too much time of yours. Thanks a lot for coming here. And I now that we are closely associated through Shivani, you will get more and more updates about us. Yes, I would certainly accept that that this Vastu has changed 360 degrees after 10 years. I remember 2012 मध्ये मॅडम आपण 2012 मध्ये जून जुलै मध्ये हे सुरू केलेलं आहे. 10 वर्षामध्ये certainly काय झालं, not only physically, the energy of this place has certainly changed. Those who have come after 10 years, you will feel that. Otherwise, before it was a very challenging thing. यहाँ पे जो भी activities होती थी, it was very disturbing. It was not something where everyone would like to come. But this is definitely because of the Nayam Shala, because of this activity and other activities, it has definitely gained a respectable, and it is a landmark by itself, Hedgevar and the New Age Yoga Institute. Thank you very much. Thank you for coming and thank you for blessing us. And be associated. We will call you again and again. Thank you. And congratulations, everyone. Yes, we wanted to felicitate Sanjay Madam and Hemangi Madam as senior teachers. We wanted to wait for you. The women who have carried the show today. Thank you very much, all YPI students, YMR, Yoga Master, Masters, and the dance team. Thanks for coming and honoring this occasion. Thank you very much. The function is over. Thank you. I think 5 to 6 class must be also waiting. आज है 5 to 6 हमारा है. Okay. 5 to 6 class, you can continue. Sorry for the delay. I will leave an teacher can take one here. Who is the teacher? I see teacher कौन है जो आया? अच्छा. Okay, I'll keep it on for some time. Karidi को मैं I will make her. अरे मैडम का बुके है. Host Karidi के तो host. Amish coming within 5 minutes. Amish the teacher. I will assign you the. Make you this host and leave.
Are we having the class today? Are we having the class today? अभी सर ने तो बोला कि क्लास के लिए, पर मैम नहीं आई अभी। मैम आई नहीं है। तो कुछ फंक्शन था ना वुमेन्स डे का। हाँ वो चल रहा था, अभी मैंने लॉग इन किया तो। हाँ अभी जस्ट खत्म हुआ ना तो। ओके ओके। मुझे लगा था कि आज क्लास नहीं होगी। नहीं, उन्होंने लास्ट में बोला कि 5 to 6 तक कंटिन्यू करिए करके। कंटिन्यू करिए। कौन देने वाला है क्लास? No idea, we haven't got the information. She said they announced in the end that they can have 5 to 6 sessions. No teacher has come, eh? Not yet, nobody has come. Acha. Okay, wait, I will talk to someone. No. बहुत लेट हो गया ना। हाँ शायद कंटिन्यू नहीं करें। कोई आएगा अभी 5:25 होने को है। आज हीना मैम आने वाली एक्चुअली ना। मेरा तो लास्ट वीक भी इतना क्लास मिस हो गया अभी। मैं आज एकदम बैठी तो काफी बार क्लास मिस किया, 2-3 मेरा कोई ना कोई गेस्ट था, ये था, ऐसे। आपका मैसेज देखा था। हाँ वही ना, मैं आज एकदम बैठी तो अरे बाप रे ये क्या चल रहा है। आज वो वुमेन्स डे का प्रोग्राम था ना, 4 से 5 का बैच नहीं रखा था। तो उसमें थोड़ा डिले हुआ तो थोड़ा लेट हुआ। हाँ मैंने देखा 5 बजे से मैं देख ही रही थी, वापस मैं लीव करती थी, वापस ज्वाइन करती थी, वापस लीव करती थी। आज ये इंटरनेशनल विमेंस के लिए एक प्रोग्राम था। हाँ। और 2:30 to 4:45 इसके लिए हमारा 4 to 5 बैच नहीं करके बोल रहे थे। एंड इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 5:15। बाद में बोला 5 to 6 के लिए स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे। एंड आई डोंट नो हु इज आपका टीचर कौन है करके। हीना टीचर आती है आज। हीना टीचर। हाँ
I think she was also there only. उधर ही थे लगता है अभी. They are not updated. So in our group also nobody has updated. हाँ, In group किसी ने also nobody रिप्लाई भी नहीं दिया है. मैंने बोला if something is there. रविंद्र जी ने लिखा तो मैंने भी लिखा कि आई एम ऑल्सो वेटिंग, बट किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है. हाँ, रिप्लाई भी मैं लिखा ना अभी, है कि नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया है. They should take care, no? जान दो, आज सब लोगों को छुट्टी. हाँ, वही कर. के बाद क्या करने का? बाहर करने का तो मैं बाहर नहीं. हाँ. और कल भी वैशाली मैडम बोली कि वेडनेसडे मतलब आज है, ऐसा कुछ वो भी बोली नहीं. वेडनेसडे के लिए 4 to 5 के लिए मैसेज था, लेकिन अपने क्लास के लिए रेगुलर है करके उन्होंने लास्ट में प्रोग्राम के बोला. लिखा इसमें. हाँ, जब ये प्रोग्राम हुआ ना वुमेन्स डे का, उसमें लास्ट में बोला. अच्छा. लेकिन अभी बंद है उनको. एक्चुअली अपना सेक्शन होता था, टाइमिंग था ना. 5:10 को हो गया उनका खत्म. अभी 5:25 हो रहा है. अब क्या करेंगे, जाने का क्या, बंद करने का? लेट अस 5 मिनट रुकेंगे. 5 up to 5:30. 5:30 तक रुकते हैं. 5 रुकेंगे. कोई इन्फॉर्मेशन है तो सबने उसमें लिखने का. Nobody is there, will you? Some teacher has joined, I think. Joined? कोई आई नहीं है. तरिणी मैडम है आपका उधर? हाँ, तारिणी मैडम है. ज्वाइन किया लगता है. 1 2 3 4 5 6 7 जन है हम लोग. मैडम आई. अमी जी आई है. Okay, fine. Yeah. नहीं, you will have to make me host, then only it is possible, otherwise वो नहीं होगा. आपको है ना न्यू एज योगा इंस्टीट्यूट मेरा जो दिख रहा है ना, हाँ, तो उस पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे राइट हैंड अपर साइड में. हाँ, तो वहां पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा मेक होस्ट करके. कैन यू सी दैट? हाँ, उसमें आपको होगा मेक होस्ट करके. हाँ, होस्ट. ओके फाइन, थैंक यू. या आप आए हो ना अम्मी? नमो नमः एवरीवन. हाँ, आज लेट हो गया. 5:30 बज गए. आज मुझे बताया गया कि क्लास ना कैंसिल हुआ है, सो मैं ज्वाइन किया और लीव कर दिया. ओके फाइन. एनीवेज
पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं. Everyone will sit down. अब जो भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सको उसमें बैठ जाइए. जस्ट इंक्रीज योर वॉल्यूम. सबको सुनाई दे रहा है? यस. यस, मुझे तो दे रहा है. सबको म्यूट करने को बोलो मैम. म्यूट करने को बोलो सबको. नहीं, I'll mute. ओके. अभी नाउ जस्ट चेक योर वॉल्यूम. किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो ठीक है. या प्लीज चेक. ओके फाइन. पहले अच्छे से रिलैक्स हो जाइए. कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए, बैठ जाइए. अगर आप चाहे तो मुद्रा ले सकते हैं. दिस इज फॉर वेट लॉस, दिस इज फॉर ध्यान. आपको मुद्राएं सिखाई गई है. एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक एनी ऑफ द मुद्रा. अगर आप मुद्रा नहीं लेना चाह रहे तो जस्ट कीप योर पाम्स ओपन. ठीक है. आपके बाद and just normal inhale and normal exhale. धीरे से श्वास को लेना है और धीरे से श्वास को छोड़ना है. आंखों को बंद ही रखिए ताकि आप जो भी अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उसी पे ध्यान रहे. आप will take at least 10 normal breaths. Normal inhale and normal exhale. और जैसे ही आपका पूरा ध्यान अपने श्वास पे आएगा आप और ज्यादा लाइट फील करेंगे. Okay, now almost 10 breaths are done. So we'll join our hands for the prayer. दोनों हथेलियां आपके ऊपर से लेके नीचे तक जुड़ी हुई. हो सके तो दोनों एल्बोज एक लाइन में और आपके दोनों हाथ जो है वो चेस्ट के लेवल. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदिभिः योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं We will chant Omkar 3 times with Omkar longer. So inhale everyone. Inhale. Inhale. थोड़े और सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद ही रखिए. Now you can rub your hands. और जैसे ही आपको गर्माहट महसूस हो you can rub it to your eyes and feel the warmth. धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए. Start with the सूक्ष्म व्यायाम. So सब लोग खड़े हो जाएंगे.
अपने मैट पे, राइट। सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको नेक सबसे पहले लेफ्ट में और राइट में लेके जानी है। सो बिल्कुल लाइन अपने दोनों पैरों में शोल्डर के जितना डिस्टेंस रहेगा, हाथ कमर पे। फर्स्ट वी विल गो टुवर्ड्स द राइट साइड, सिर्फ साइडवेज आपको जितना हो सके उतना पीछे लेके जाना है। एंड वी विल बी हियर टिल 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए वी कम टू द सेंटर। कभी होल्ड नहीं करेगा श्वास को, just keep breathing. We go towards left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Come to the center. Knee se, and we will go towards our right side again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. धीरे से सेंटर में आ जाइए। And we will go towards left side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly come to the center. Last round. Towards right side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly come to the center. Towards your left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Yes, very good. सब लोग सामने देख लीजिए। नेक सामने रहेगी अभी। Now we will just do rotation, ठीक है? So first we will go down. धीरे 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 जितना हो सके उतना हर एक डायरेक्शन में मैक्सिमम। पहले देख लीजिए कितना स्लोली मैं करूँ। इतना स्लोली आपको हर एक डायरेक्शन में मैक्सिमम लेके जाना है। ओनली 3 राउंड्स, ठीक है? ओनली 3 राउंड्स क्लॉकवाइज। आप चाहे तो अपने हाथ कमर के ऊपर रख सकते हैं। ओनली 3 राउंड्स क्लॉकवाइज। और 3 राउंड्स के बाद आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आप पहले नीचे रखेंगे एंड यू विल गो टुवर्ड्स योर राइट साइड। यस जी, धीरे से और जितना आपको हो सके उतना मैक्सिमम हर एक डायरेक्शन में नेक को लेके जाना है। इफ यू आर डन देन हाथ को नीचे रख दीजिए, पाम्स ओपन बाय द साइड ऑफ योर बॉडी और चिन थोड़ी सी ऊपर रख के यू कैन रिलैक्स। यस, ओके। अभी आपको क्या करना है, यू विल टेक योर आर्म्स अप, ठीक है? यहाँ से आप ऊपर एंड यू विल गो टुवर्ड्स बैक, ठीक है? आपको नेक सीधी ही रखनी है और हाथ को जितना हो सके उतना पीछे लेके जाना है। ओके, यस। हाथ सीधे, जितना हो सके उतना आप हाथों को सीधे रखेंगे एंड वी विल टेक इट बैक 10 टाइम्स, ठीक है? 1 हो गया, ये 2 हो गया। आपकी नेक को सीधी ही रखिए, ठीक है? नेक को आगे पीछे नहीं करना है। यस, 10 टाइम्स होने के बाद आपके हाथ नीचे आ जाए। रीता जी, और आपके हाथ अगर सीधे हो सकते हैं तो सीधे करने का ट्राई कीजिए। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ 10 टाइम्स और फिर धीरे से हाथों को नीचे लाइए। वेरी फाइन। अब
अगर किसी को हाथ दुख रहा है तो प्लीज प्रेस कर लीजिए ताकि मसल टाइट ना हो। थोड़ा सा झटक दीजिए हाथों को ताकि रिलैक्स हो जाए। Now we will do just rotation with both the arms. So पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मैक्सिमम पीछे जाना चाहिए। Just 5 rounds clockwise. Okay? Very good. 5 rounds आपको clockwise लेके जाना है और 5 rounds के बाद you have to do anti-clockwise. Anti-clockwise उल्टा होगा, ठीक है? पीछे से आगे। जितना हो सके उतना हाथों को पीछे लेके जाइए और ऊपर, ठीक है? मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो उतना मैक्सिमम लेके जाइए। यस, वेरी नाइस। ओके, फाइन। नाउ वी डू लेटरल्स, ठीक है? जितना हो सके उतना राइट साइड जाएंगे। यस, एंड वी विल बी हियर टिल 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. To the center, towards left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. आप सेंटर में आ जाइए। Towards right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पूरा आपका वेस्ट लाइन जो है साइड वेस्ट का, उसमें आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, ठीक है? Towards left. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly come to the center. ओके, अब हमें क्या करना है? आपके फीट में डिस्टेंस रहेगा बट यू हैव टू जॉइन योर नीज, ठीक है? नी को जॉइन कर लीजिए। फीट थोड़े से अपार्ट रखिए और नी को जॉइन कर। ओके, हाँ, मतलब ऐसे ट्रायंगल रहेगा। ये आपके फीट है साइड वेज और आपको नी को जॉइन रखना है। ओके, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा डिस्टेंस एंड यू हैव टू कीप योर नीज जॉइन, ओके, ताकि आपका अच्छे से बैलेंस रहे। एंड वी विल मूव आवर नीज, ठीक है? रोटेशन में आपको मूव करना है। 5 राउंड्स ही करेंगे सिर्फ। यस, ओनली 5 राउंड्स क्लॉकवाइज। एंड डन विद 5 राउंड्स। आपको नी को नहीं पकड़ना है, नी के ऊपर होल्ड करना है, ठीक है? ओके, एंड देन 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ओके, if you are done, then you can come to center और सीधा खड़े हो जाइए। Now we will sit on mat. सब लोग बैठ जाइए। If you want to take the pillow, you can take. जो लोग लेग्स पूरा फोल्ड नहीं कर सकते वो पिलो लेके बैठे। If you want to take support, you can take support. अगर आपका फोल्ड नहीं हो रहा है तो नीचे पिलो रख लीजिए एंड आप लेग को फोल्ड करके बैठ सकते हैं, ठीक है? What we have to do, आपको पहले दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखना है, ठीक है? यस, दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखने के बाद आप राइट लेग को लेंगे और राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे आप जितना नजदीक हो सके उतना फोल्ड करने का ट्राई करें। अगर आपका नहीं हो रहा है तो यू कैन कीप द लेग लाइक दिस आल्सो, ठीक है? जितना आपका फोल्ड अच्छे से हो रहा है, आप कंफर्टेबली फोल्ड कर सक रहे हो, उतना ही आपको फोल्ड करना है, ठीक है? ओके, दिस विल गो नीचे
और आपका लेफ्ट लेग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। राइट लेग नीचे है, लेफ्ट लेग ऊपर है। अगर आपका जरा भी फोल्ड नहीं हो रहा है तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। आपको जैसे कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो नीचे, वैसे आप फोल्ड करके बैठिए। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सब लोगों का अच्छे से हो रहा है। ओके, सुजाता जी आपका पूरा पैर ऊपर ही रह रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। जितना नीचे जा सकता है ना, हाँ, मतलब सुखासन में कैसे बैठते हैं, बट ये थोड़ा क्लोज सुखासन हो गया, ठीक है। ओके, अभी हमारा कौन सा पैर ऊपर है सब लोगों का? लेफ्ट पैर ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लेंगे एंड जितना हो सके उतना पीछे रखने का ट्राई करेंगे, ओके। और आपको देखना कहाँ है? सामने देखना है, ठीक है। और राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे। इफ यू कैन होल्ड तो ठीक है, अगर नहीं होल्ड कर सकते तो जहां पे भी आप कंफर्टेबली रख सकते हो हाथ को उधर रख लीजिए, ठीक है। और एटलीस्ट मैं 10 काउंट्स कर रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, यू कैन लीव। पहले हाथ को रिलीज कर लो धीरे से धीरे से धीरे से। Now you can release your legs one by one. पहले ऊपर का and फिर नीचे। Very good. सुजाता जी हाथ एटलीस्ट यहाँ, अरे सुदेश जी हाथ एटलीस्ट ऐसे भी नहीं हो रहा है पीछे, ऊपर का हाथ थोड़ा सा हो सके तो उसको नीचे लेके जाने का ट्राई कीजिए, हाँ सुदेश जी। ओके, अभी हम लोग कौन सा लेग नीचे लेंगे? लेफ्ट लेग, और राइट लेग को उसके ऊपर, ठीक है। आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपको पिलो का सपोर्ट लेना है, पिलो का सपोर्ट लीजिए एंड कंफर्ट योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। अब जाएगा आपका राइट हैंड ऊपर और आपको बैक को टच करना है एंड देन लेफ्ट हैंड नीचे से। अगर आप होल्ड कर सकते हो, फिंगर्स को टच कर सकते हो एक दूसरे से तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो बैक पे जहां पे भी हो इट इज बी देयर। 3 4, आपको सामने देखना है, सामने। यस, अपनी नेक नीचे नहीं झुकनी चाहिए, आपको सीधा बैठ के सीधा ही देखना है। 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड, रिलीज योर हैंड्स। हैंड्स को धीरे से रिलीज कर दो एंड रिलीज योर लेग्स वन बाय वन। लेग्स को रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा टैप कर लो लेग्स को, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अभी आपको क्या करना है, जिनको कंफर्टेबली हो सके वो ही कीजिए, अदरवाइज जस्ट लिफ्ट योर लेग अप। जो एल्बोज का सपोर्ट ले सकते हैं वो सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। यू हैव टू गो ऑन योर एल्बोज, यू हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ योर एल्बोज, ठीक है। लेग स्ट्रेट ही रहेंगे। पहले हम राइट लेग को लिफ्ट करेंगे। यस एंड बी देयर। आप जितना टाइम तक उसे होल्ड कर सकते हो उतना टाइम आप होल्ड करें एंड स्लोली यू विल कीप योर लेग डाउन। अगर आप 10 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हो तो लेफ्ट भी आपको 10 काउंट्स तक होल्ड करना है, ठीक है। सो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन लिफ्ट योर राइट लेग अप। You have to take the support of your elbows. Yes, and you can keep it down. Now, left leg का turn है. Yes. Left leg को ऊपर कीजिए. Very good. And just be there. Leg आपका सीधा ही रहेगा. सुदेश जी आप चेयर में बैठ के भी लेग को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? आपका काउंट कंटिन्यू कीजिए एंड देन स्लोली आफ्टर योर काउंट यू विल कीप योर लेग डाउन। मैं हाथ पे प्रेशर नहीं दे सकती, प्लेट डाली है ना इसलिए। नहीं, सिर्फ पैर बैठ के भी आप पैर ऐसे लिफ्ट कर सकते हो, ऐसे लाइक दिस। आपको लेग ही चेयर लिफ्ट पे करना है। चेयर पे कर हाँ, सकती हूँ। हाँ चेयर पे ही आप सो मत,
मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप बैठ के करो, चलेगा। ओके, अब जो दोनों कर सकते हैं वो ही करेंगे। जिन लोगों का हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को ऑलवेज हाई बीपी नहीं रहता है, वही दोनों पैर को लिफ्ट करेंगे। अदरवाइज अल्टरनेट, कंटिन्यू विथ अल्टरनेट लेग्स ओनली। ठीक है, जो दोनों से लिफ्ट कर सकते हैं वो दोनों लिफ्ट करेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जितना कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो उतना ही होल्ड करें, ज्यादा नहीं। ठीक है, रिलैक्स, सो जाओ, उसके बाद यू हैव टू स्लीप। रिलैक्स, रिलैक्स इन शवासन। So only one round, only one round. Relax in Savasana. See, one more thing I just want to tell you all. Savasana में जिन लोगों को पिलो कंपल्सरी लेना है, कौन लेंगे? कि जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो ही पिलो कंपल्सरी लेंगे। ठीक है, नेक का प्रॉब्लम है, वर्टिगो है, सर्वाइकल का जो भी प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर का है, वो ही सब पिलो ले। अदरवाइज पिलो मत लो शवासन के टाइम। ठीक है, या रिलैक्स इन शवासन। शवासन में आपके दोनों पैरों के बीच में अंतर रहेगा। आपकी हथेलियां जो है वो आकाश की तरफ रहेंगी और आपको अपना पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ ब्रीदिंग पे रखना है। ब्रीदिंग अवेयरनेस आपको डेवलप करनी है, आपकी ब्रीदिंग अवेयरनेस को। जैसे आपके नॉस्ट्रिल्स में से हवा अंदर जा रही है और हवा कैसे आपके लंग्स से होकर आपके एब्डोमिनल रीजन तक पहुंच रही है, और वही हवा आपको जब भी एक्सहेल कर रहे हो तो सेम ही रूप से वो कैसे एक्सहेल हो रही है। जस्ट ऑब्जर्व दैट। दिस इज अ वेरी मिनी शवासन। आपको और कोई कुछ भी नहीं करना है शवासन में, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। ओके फाइन। अभी अपने दोनों लेग्स जो है उसे नी में से फोल्ड कर लीजिए। दोनों लेग्स को नी में से फोल्ड कर लीजिए और आपकी दोनों हथेलियां जो है वो ग्राउंडेड कर लीजिए। ठीक है, दोनों हथेलियां ग्राउंडेड रहेंगी और लेग्स जो है वो नी में से फोल्ड हो जाएंगे। यस, हम लोग सेतु बंधासन करने जा रहे हैं। तो हम लोग का बटक्स को लिफ्ट करेंगे जितना हो सके उतना। कंफर्टेबली जितना हो सके उतना लिफ्ट कीजिए बटक्स को। और जो कंफर्टेबली लिफ्ट कर सकते हैं वो अपने टोज पे जाएंगे। ठीक है, यू हैव टू लिफ्ट योर हील्स अप। जो अच्छे से उठा सकते हैं उन्हीं के लिए है ये टोज पे जाना। अदरवाइज जो अभी जो कर रहे हैं स्टार्टिंग, उन लोगों के लिए यू जस्ट हैव टू कीप योर फीट डाउन और सिर्फ बटक्स को उठाना है। आप जितना होल्ड कर सके उतना कीजिए कंफर्टेबली एंड देन स्लोली गो डाउन। धीरे से आप नीचे जाएंगे एंड रिलैक्स। वेरी गुड। We'll go for the next round. Same thing. Ready? हाथ की पोजीशन ले लीजिए and just lift your buttocks up. Very good. कंफर्टेबली आप जितना होल्ड कर सके, हाथ आपके दोनों नीचे ग्राउंडेड रहेंगे। यस, एंड यू हैव टू लिफ्ट योर बटक्स। और जो कंफर्टेबली उठा सकते हैं वो टोज पे जाने का ट्राई करेंगे। ट्राई टू गो ऑन योर टोज। यस, वेरी गुड।
Listen to your just relax yourself. दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे. अब आपके दोनों हाथ जो है वो कान के पास ऊपर लेके जाइए. वी आर गोइंग टू डू यष्टिकासन. सो आपका स्ट्रेच भी हो जाएगा और पूरी बॉडी को रिलैक्स भी मिल जाएगा. ठीक है. सो दोनों हाथ जो है वो ऊपर की तरफ आपके कान के बाजू में और नीचे टच करके रखिए. ठीक है. ग्राउंडेड रखिए. दोनों हाथों को हवा में मत रखिए, वरना हवा में आपका जितना आप रखोगे ना तो उतना प्रेशर हाथ पे बढ़ेगा. हमको स्ट्रेचिंग ज्यादा करनी है. ठीक है. सो कीप इट ग्राउंडेड. अभी आप हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पैरों को नीचे की तरफ, और एटलीस्ट आप 20 काउंट्स तक होल्ड करने का ट्राई कीजिए. ठीक है. स्ट्रेच. 1 2 3